Nobody is the speaker here. Yeah, we will start our session at 6:15, dot 6:15. Yeah, sure.
We will start our session within 1 to 2 minutes. This is Indranil Mukherjee. We are waiting for many more students to join.
One request to all the students. Please join with your name. HP. Someone is joined with his name HP. Please change your name to your original name. HP, please join with your name. HP, someone is joined with the name HP. HP, please join with your name, original name. Okay, fine. Very good evening. Very good evening to all the students. Just 1 minute more and we will start our session. Very good evening, Aditya. Thank you, Brishav. Please start the company introduction. Voice is not audible, Brishav. Yeah, fine. Hi, I'm Rohit Ghosh, CEO, Skill Edge. We are an edutech redefining white-collared skilling ecosystem by creating a global revolutionary tech platform providing guaranteed skilling for livelihood at your doorstep at an affordable price to 35 million learners. We are solving the problem of employability in three fundamental ways. Number one, by providing outside-in approach, in which the industry-relevant skilling will be mapped back to your academic syllabus, making your degree relevant. Number two, supervised learning, in which an industry expert will handhold you to the last mile, ensuring guaranteed skilling for that particular job. And number three, it's a single platform in which we skill you for functional, technological, and behavioral skills. You are a student pursuing graduation or post-graduation and a working professional between 0 and 3 years of experience. Come and visit our website skill-edge.com and let us edge your skills. Skill Edge, skilling redefined. Soaring price. Next, we will see our students review. Engineering background, it was tough, but not after connecting with Skill Edge. It was an amazing journey.
Skill Edge provided me with exactly what I was looking for. Hey, I'm Manav Kheda. I'm from Haryana. Currently, I'm pursuing mechanical engineering from Uttar University, Delhi. I got to know about Skill Edge while I was searching a few of the courses on internet to improve my skills. There I came to know about Skill Battle that was organized by Skill Edge. Being from core engineering background, it was tough, but not after connecting with Skill Edge. It was an amazing journey. Skill Edge provided me with exactly what I was looking for. The best part about Skill Edge is that I was trained by industry professionals about the concepts currently being used in the industry. Skill Edge focuses on both my soft skills as well as my technical skills required by the industry. The concept of digital resume was amazing. Helped me not just make my resume but to build my resume. In conclusion, if you are looking for growth, eventually that comes from learning or upgrading yourself, Skill Edge is your best shot. Thank you. Thank you, Rishabh. Please make me host. Yeah, thank you, Rishabh. Now I am making Pratiksha ma'am co-host. Yeah, Pratiksha ma'am, please share the screen. Okay, sir. Is it visible, sir? Yes, it is visible. So very good evening, students. Few protocol before starting this session. My voice is audible. If it is clearly audible, please write a yes into the chat box. I will on my video after 2 minutes. Due to some bandwidth issue, I will on my video after 2 minutes. Please write a yes into the chat box. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you so much for this quick response. Thank you. Fine. We are waiting for our mentors who will join today, Mr. Saurav Khera sir, Mr. Ashwin Mahindrakar sir, Ravi sir. Just give me a few seconds. Okay, fine. Very good evening. Today, we gather over here for the induction session on graduate engineer training, that is GetEdge,
the new age core engineering training. Skill Edge, India's one of the early award-winning vernacular-led skill tech platform, awarded by IIT Kharagpur in 2020 in their Global Entrepreneurship Summit. Vernacular-led means we will train you in Hindi as well as in English. And your interview preparation, mock interview preparation will be in English. Next slide, please. Please change the slide. Wait a minute, something went wrong. Yeah, thank you. So your interview preparation will be in English for the high paying job titles for the fresher as well as working professionals. And that is what we are as a company. We care for your career. GetEdge ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग एक ऐसा ट्रेनिंग है which is created first time ever in India by Skill Edge, a course which will prepare you all the domain of manufacturing industry and core engineering vertical. And those are graduate training in design, plant operation, product development, manufacturing department, and research and development, that is R&D. And these job titles are high in demand, but low in supply. Skill Edge has come up with GetEdge, which is industry-led, in which industry people have tick mark our syllabus, that is mechatronics, engineering design, robotics, quality techniques, problem-solving methodology, new product development tools, lean manufacturing, and industry life project, all together in one course within 15 to 20 weeks. Skill Edge will give you offline experience in online mode. We focused on knowledge plus practice plus get in touch with industry veterans, and finally your placement drive. In Skill Edge, we have 3 types of mentor. That is 10 to 12 years of experienced mentor, industry experienced mentor, be specific, 12 to 15 years of industry experienced mentor, and 15 plus years of experienced industry mentor. Till now, we have delivered over 7,000 plus hours of program, over 25,000 plus individuals in 100 plus institutions in India. Skill Edge was also awarded by, that is graduated from TiE Pune Accelerator Program, and many more laureate in Skill Edge further. And one more thing, in Skill Edge, we always provide you, that is student to mentor, or mentor to student ratio is 3:1, 3 mentor for every student. Next slide. These are our founding team and advisory board member. Mr. Rohit Ghosh, sir, CEO and founder of Skill Edge. All of you, please go on mute. Mr. Rohit Ghosh, sir, CEO and founder of Skill Edge, 16 plus years of experience. Shailendra Marathe, sir, CFO, also the founder of Skill Edge, 25 plus years of experience in financial and banking sector. Mr. Vineet Gupta, sir, over 24 plus years of experience, director of Jambori Education and founder of Ashoka University, Plaska University. Suresh Mahalingam, sir, over 30 plus years of experience and board member of Aviva and Excel also. Mr. Devi Prasad, sir, 29 plus years of experience and former board of director of Infosys.
Mr. Atul Gupta, sir, 30 plus years of experience and board of director and founder automation, and he is the alumni of INSEAD France. This shows that what we are doing is being acknowledged by industry experts. Next slide, please. This gives me an opportunity to introduce you our course mentor, our chief mentor, Mr. Saurav Khera, quality manager in Vridgun Group, over 15 plus years of experience, MBA in supply chain management, MTech in CAD/CAM, Six Sigma Black Belt, ASQ, ASME, GD&T professional, Professor Ashwin Kumar Mahindrakar, sir, over 12 plus years of experience in mechatronics and robotics domain with the approach of innovative product development. He is a professor of MIT ADT University, Pune. Mr. Sandeep Kasbe, sir, manager at Vridgun Group, 12 plus years of experience in new product development, prototype testing, hydraulic system design. Mr. Ravish Kambos, sir, deputy manager in welding in Vridgun India Private Limited, over 11 plus years of experience in many sectors like nuclear, defense, power, oil and gas, constructions, equipments, and refinery. Next slide, please. This brings me to the next slide, that is course expert. In our previous slide, they are our mentors, and these are our course experts. Mr. Rohit Ghosh, sir, as you have already seen, CEO and co-founder of Skill Edge, over 16 plus years of experience in consulting and education management, has done his BE from Pune University, MTech from Thapar University, and MBA from France. भाभी के लिए तो मना करवाया रोहित भैया INSEAD France, one of the top most management schools in the world, ranking 3. Mr. GC Singhal, sir, 45 plus years of industry experience, B from BITS Pilani, MTech from IIT Mumbai, and former scientist from BARC, Bhabha Atomic Research Center. Sir will take care of your project. And he, sir, is the director of Pragya Technology. It's an automation company in Pune. Dr. Miraj Danish, 15 plus years of industry experience, BTech, MTech, PhD in thermal engineering, and sir is mechanical fresher job interview specialist. This again shows what we are doing are acknowledged by industry experts. और यहाँ पे जो भी experts, mentors, जो भी हैं, all are from industry. They are renowned personality from the industry. This brings me to the next slide. That is your GATES syllabus. And thank you for joining. And it's a great honor to introduce you to our all students, to our all chief mentor, जो आज join हुए हैं आपके साथ. And it would be an honor and privilege to welcome our chief mentor, Mr. Saurav Khera, sir, our mentor, Ashwin Kumar, sir, Ravish Kambos, sir, Sandeep, sir. Welcome you, sir. Now, I'm making co-host to our all mentor. Hello, good evening, guys. Indranil, can you hear Sir, me? welcome. Yes, sir. Okay, my voice is clear. Yes, sir. Very good evening. Clear, sir. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good evening. Good evening, Indranil. Good evening, all. Okay, so my name is Saurabh Khera. So first of all, excuse me. We are actually traveling back from office. So there could be some network issue. Even Sandeep sir is also traveling right now. So maybe he will also experience the same issue.
So let me know in the nil as soon as something goes haywire. Let repeat the things or get English. Both are okay or only English? In the nil? Yes, sir. It's okay. English and Hindi Hindi, both English are. both. Yes. Okay, okay, okay. All right. All right, guys. Okay. First of all, thank you, Indanil, for inviting us to this induction program. Okay, guys. So Indanil has already told you about how we started this, why Skill Edge is doing this program. This is first of a kind in India, and maybe all over the world. You will not find this kind of syllabus, this kind of course anywhere else. Okay. All right. So me a little bit of highlights about this program. Um, this program is called this program is made by industry experts only, as he said. So, for example, I was part of this making of the syllabus, and a few people from JCB, for example, from John Deere, from Tata Motors, big companies. There were like 15, 20 people who are participating in making this syllabus and getting it corrected while going ahead. Okay. And then this syllabus is also approved, kind of approved. I will not say approved in written, but this syllabus is also seen by industry, by all the companies that I just named, and many more companies on the supplier side also. When I'm saying supplier side, what I mean to say other than OEMs. So all these companies that I just named are actually OEMs, original equipment manufacturers, but there's a huge supplier base also that we call as tier 1, tier 2 industry. So this syllabus is approved by them also, seen by them also, and they all have agreed. They all have told us, told to about this. All these things, if you teach students, and if student gets all these things, if he really gets skilled into all these things mentioned in this syllabus, then we are ready to take interview of those guys, and it will be a great positive impact. Okay, and there are very high chances when we'll go inside the syllabus, you will get it. There is like 200% chance of getting a clear in the interview, and all those things should not be a problem. And of course there is a chance, very well chance to get much higher salary than someone will get if without getting all the skills that are mentioned in the syllabus. Okay, so this is just a highlight how the syllabus was made, and how it got approved, or got vetted by the industry. So now we will go inside the syllabus, what all we have inside this course. Okay, next slide, Nandini. Okay, so guys, this course is basically divided into different modules. Okay, and all these modules cover all the domains, all the departments of the manufacturing industry. Okay, for example, you will find engineering design, you will find new product development, you will find quality, welding, mechatronics, robotics, problem solving, lean manufacturing, and all. There are 8 modules in all, and all those 8 modules cover all the manufacturing departments in you will find all these things happening in all the industry, all the companies in India, abroad, in a manufacturing industry. Okay, so this syllabus basically covers all of that. So if you cover this syllabus, if you do this syllabus in a nice way with us, with Skillage, there is nothing left behind. कुछ रह नहीं जाता है उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप ये सब पढ़ लेते हो तो. And that too, this syllabus, the whole content in all the modules will not be theoretical. Wherever required, but it will be completely targeted towards the industry, what is actually happening in the industry. It's not like that will teaching you anything bookish or anything um, um, similar to what you have learned in your academics in college. It will be completely industrial. Okay, what happens really in industry, in a company, in that particular department. Okay, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वही काम आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग ऐसे करते हैं. एंड ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज, हर टॉपिक के पीछे एक रहेगी, समझ जाएगी वो जो करते हैं,
study, उसका एक example, this is the pedagogy we are going to follow while explaining you the content of the syllabus. Okay. So first of all, I think Sandeep sir is also there with us. So I'll invite Sandeep sir to take us through this engineering design module content. Since he'll be teaching with this engineering design, I request Sandeep sir to explain this. Yeah, Sandeep? thank you, Saurabh sir, for this warm welcome. Thank you, Indra. And good evening, all. So we will be going through strength of material properties and application. Then a design for manufacturing, which plays a very critical role in prototyping of the components. So you will get an insight of this where, okay. Yeah, we are traveling. So actually there is a network issue. So let us know that if I want to repeat, I will repeat that. So for design for manufacturing, we are talking about where it is a very important step in the prototyping, product development, where you get to know about what are the challenges when we design a component and how the manufacturing feasibility is there based on the cost and the time required for that, and any process improvement is needed over there. Then engineering change, which is one of the the drawing preparation and reading. It is one of the language where the designer and the manufacturer interact with each other. Where when drawing is prepared, they are able to understand and how to manufacture and define the processes what are required to prepare a component and part. Then engineering changes notice is one of the very key important where the history of changes is recorded. Whenever there are multiple changes in the product development happens, so that they are conveyed and they need to be recorded from there, so that in future, if anything we want to know in which year or what kind of a changes pattern in previous, so that we don't repeat the same thing. And there are so the engineering change the play then industrial hydraulic system, it will give an overview about what kind of a hydraulic system is used in industry, what are the importance of hydraulic system, because now everywhere automation is there. So hydraulics plays a very key role in each and every aspect of industry. Then there is the industrial electrical circuit and systems design, which is again, it is a combination of electrical and hydraulic that drives the automation. The key aspect of this course, and along with power and transmission, like new emission systems are coming into the picture, and how industry is changing and accepting these changes, and the environmental factors are there. So all this will be combined in engineering design, wherever, as Saurabh sir also earlier said, it is not about all theory. It is about how practical things are there, how industry works, and how they are connected, interconnected with each other, along with design department and also the guys who are in manufacturing. Thank you, Saurabh sir, for this is from my end. Yes. Thank you, Sandeep sir. There are a few more things actually. I'm saying that this is important. Many guys think when they are in college, they think that they want to become engineering design expert. They want to go into design department and all. So that's why I just want to mention few more things. See, guys, as I mentioned, theory भी रहेगा जहाँ जहाँ requirement है. If you see strength of materials, भी इसमें एक bullet point है. तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के आपको वही चीजें ब्रश अप करवाई जाएंगी जितनी जरूरत है, जितना इंडस्ट्री में यूज होती है. इंडस्ट्री में जैसे आपको पता है, आपने सुना होगा कि हर चीज जो आप बुक में पढ़ते हो वो यूज नहीं होती है. तो जितना यूज होता है, जितना आपके लिए रेलिवेंट रहेगा, उतना ही आपको रिवाइज करवाया जाएगा. एंड देन वी क्विकली गो इनटू द इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, जो एक्चुअली में काम डेली बेसिस पे होता है, जो एक्चुअल में संदीप सर डेली बेसिस पे करते हैं. He has been doing it, he has been doing development, testing, concept designing, CAD modeling, and also all those things he will be telling you. Okay, and in engineering design there are many specializations. Okay, ऐसा नहीं होता है कि जाके कोई भी चीज डिजाइन करने लग जाओ. There are different teams. Some people do hydraulics designing, some people are experts in electrical, some people are experts in engine and transmission. तो ये तीन जो important modules हैं, ये भी आप देखोगे तो लास्ट के 3 bullet points में लिखा हुआ है. So these 3 modules will be taught to you separately by separate experts. There are experts in hydraulics. Actually, Sandeep sir is expert in hydraulics. He'll be teaching you hydraulics. There is an expert who is again one more person having more than 16 years of experience. He's electrical expert. He'll be teaching the electrical
systems and design, and then engine and transmission in the same way, So I just wanted to mention that. Can we go to next slide? Okay. Which department in certain companies. Okay, अभी उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट या फिर दूसरा जो मॉड्यूल है इसके अंदर, that is quality. We all know there is a quality department, quality engineering, quality control, quality assurance department in each and every manufacturing company, right? So these 5 things that are written here, guys: failure mode effect analysis, root cause analysis, we call it FMEA, RCA, SPC, statistical process control, process capability analysis, and then measurement system analysis, which is MSA. So these 5 things, ये 5 चीजें guys ऐसी हैं जो कि actually quality का base है, and many people who are already working in quality since many years, though those guys also struggle into some of these things after gaining 10-15 years of experience also, even, but ये चीजें, इन चीजों की इंडस्ट्री में इतनी इज्जत है ना, let me tell you, because I have a strong background from quality also. I have strong experience in quality. If you know these things now, guys, you will be seen as a person who knows quality in depth, who knows quality engineering in depth. So ये 5 चीजें अगर आप कर लोगे ना, along with this we will also cover like 7 QC tools, other tools that are used in quality, along with these 5-6 basic things, If you do this now, it will be a gem. It will be you will be at par with the people who are having 10 years of experience in quality engineering department, working for 10 years. Okay, and along with this, this will not be taught to you. So ये वाला मॉड्यूल मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, it will not be taught to you with some PPT or something. It will be taught to you with help of standards. इन सब चीजों के लिए ना अलग-अलग बुक लिखी गई हैं, जो कि General Motors, Chrysler, Ford, all these companies in collaboration with AIAG, Automotive Industry Action Group in US, उन लोगों ने कुछ बुक्स लिखी हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड मैनुअल बोलते हैं. उन मैनुअल्स के थ्रू पढ़ाऊंगा ना आपको. So many things will be taught to you. What I'm trying to say, many things will be taught to you with help of standards. For example, if you go to welding, एक welding का मॉड्यूल भी है, उसके अंदर स्टैंडर्ड्स के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा, because सारी PPT, सारी बुक्स वो स्टैंडर्ड से ही निकलती हैं, तो आपको स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाएगा, so that you are aware of these things. And even in the interview, if you take such name, I know this standard, this is a standard number where I have studied and skill edge, it will be a great positive impact. आप खुद समझ सकते हो कि मतलब किसी पीपीटी या बुक का नाम लेने के बाद आप अगर स्टैंडर्ड का नाम लोगे, मैंने इस मैनुअल से पढ़ाई की हुई है, आई नो द कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस मैनुअल, आप सोच सकते हो कितना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा व्हेन यू गो इन द इंडस्ट्री. ओके, सो क्वालिटी मॉड्यूल विल हैव ऑल दिस थिंग्स दैट आई जस्ट टोल्ड. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. Okay, as I mentioned, welding will be again one of the module with us. Welding and fabrication is a very common thing that happens in every manufacturing industry. In the end, I don't think Ravish sir is here with us today. I think he did not join. He has some other appointments. So let me explain this also. Guys, this thing will be taught to you from Ravish sir. I asked him to join, but somehow he got busy, I think. So just to tell you, so I'll not go into the details of this course right now in front of you. You can read that, but just to give you a perspective who Ravish sir is, who will be teaching you. He is an international qualified welder by himself. Okay, he is associate and member of the Indian Institute of Welding. He has all his experience, 15+ years of experience in welding only. रवि सर ने अपने हाथों से बॉयलर्स वेल्ड कर, डिफेंस इक्विपमेंट्स, रॉकेट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं अपने हाथों से वेल्ड कर रखे हैं, अपने हाथों से वेल्ड करके सिखाया हुआ है. एल्यूमिनियम वेल्डिंग किया हुआ है, स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग किया हुआ है. स्टील तो कोई भी वेल्ड कर लेता है, राइट? माइल्ड स्टील तो कोई भी वेल्ड कर लेता है. ऑल दिस कंपोनेंट्स वेयर यू फील फेस डिफिकल्टीज ना, और जहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, इनका अगर कोई वेल्डिंग एक बार कर लेता है, that person is called as a real weld engineer. So he has that kind of experience, and I actually feel honorable sometimes when I speak about welding, and he teaches us also about few of the fundamentals of welding. He brings a completely different perspective. वो किताब वाला फंडा तो लेके ही नहीं आते हैं, वो तो कोई अलग ही चीज पढ़ाते हैं. हमें भी ऐसा लगता है यार किताब पे क्यों नहीं लिखा हुआ.
So he'll be teaching you this welding module, and all the things that are related to welding will be covered in this module. Even he'll be teaching you metallurgical aspects of welding also, in the material properties. And I think there is one content in there which talk about metallurgical properties. No, not written here, but he'll be teaching you that also. Okay, he's an expert in material science, because welding engineer has to be expert in material science also, right? So he'll be the person teaching you this complete welding course. Okay, next slide. ओके अभी हमारे 3 डोमेन कवर हो गए। देखो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। इफ यू रियलाइज, मैंने जैसे कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सारे मॉड्यूल्स कवर होंगे, सारे डिपार्टमेंट्स कवर होंगे। हमारा R&D डिजाइन डिपार्टमेंट कवर हो गया, क्वालिटी डिपार्टमेंट कवर हो गया, एक हमारा वेल्डिंग फैब्रिकेशन कवर हो गया। ओके, नाउ एक डिपार्टमेंट हर इंडस्ट्री में होता है गाइस, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, improvement department, इसको process improvement department भी कहा जाता है, in many industries, in many big companies. Some companies में इसको कहा जाता है कि just improvement department who takes care of the improvements, तो इसीलिए ये वाला जो मॉड्यूल है, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मॉड्यूल है, दिस इज वन मॉड्यूल kept intentionally in this course so that we covered that domain also. That is not a very specific domain, per se, when you think about your curriculum, when you think about the course subjects, but it is kind of a subject that links all the departments. डिजाइन में भी इम्प्रूवमेंट होता है, कई बार कस्टमर कंप्लेंट्स आते हैं, कई बार असेंबली लाइन में इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। सिक्स सिग्मा, आपने अपने सिक्स सिग्मा नाम सुना होगा, सिक्स सिग्मा के हेल्प से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ऑल दोस टूल्स. So this department takes care of that, which coordinates with all the other departments and solve their problems for continuous improvement. So this module is also kept here intentionally, to cover all the departments, because there are hundreds of people working in this department also, everywhere all over the world. Okay, so ये अगर नहीं रखते तो काम नहीं बनता था, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग कवर नहीं होता था. ओके, सो यू कैन सी स्ट्रेटजीज एंड मॉडल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या एरर आते हैं, स्किल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कंस्ट्रेंट, अप्रोचेस क्या है डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्व करने की, कॉमन मेथड्स टूल्स क्या होते हैं, जैसे 8D एंड A3, ये हर इंडस्ट्री में यूज होता है. 8D, A3, सिक्स सिग्मा, हर इंडस्ट्रीज को यूज करते हैं. यू माइट हैव हर्ड अबाउट सिक्स सिग्मा आल्सो. सिक्स सिग्मा के तो ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, येलो बेल्ट के सर्टिफिकेशंस होते हैं बाहर 40-40 हजार रुपए देके, एट दैट लेवल सिक्स सिग्मा इज राइट नाउ. So these all things will be taught to you in detail, okay, in this course. Next. All right. तो अभी हमारा एक डिपार्टमेंट कौन सा रह गया? एक डिपार्टमेंट रह गया प्रोडक्शन का. When we say production, we talk about assembly. जितनी भी MNCs हैं, जितनी भी OEMs हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हैं, फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स ले लो. टाटा मोटर्स में अगर एक कार के अंदर, एक ट्रक के अंदर अगर 1000 कंपोनेंट्स यूज होते हैं, तो वो पार्ट्स आपके सप्लायर से टाटा मोटर्स लेता है, मतलब जितने भी सप्लायर्स टाटा मोटर्स होंगे वो पार्ट सप्लाई कर देंगे उसको. एंड देन व्हाट टाटा मोटर डज इज, टाटा मोटर्स डज द असेंबली. ओके, तो जब असेंबली होती है, असेंबली के अंदर लीन मैन्युफैक्चरिंग के बिना काम नहीं होता है. ओके, सो दैट असेंबली डिपार्टमेंट, दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, विल बी कवर्ड with the help of this module which is called as lean manufacturing. Lean के बिना आप असेंबली के फंडे नहीं लगा सकते. That is the fundamental for assembly and production. Okay, so in lean, types of waste, strategies and tools to eliminate the waste, तो total productive maintenance, जिसमें आपका मेंटेनेंस का जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है उसका भी रोल इसके अंदर कवर हो जाएगा. Implementation of that, of course, and then overall equipment effectiveness, OEE, and then Lean Six Sigma. There is a difference between Six Sigma problem solving and then Lean Six Sigma. That is also a separate certification going on in the industry right now. Lean Six Sigma का अलग होता है, Six Sigma का अलग होता है. So all this content in this lean manufacturing, ये आपका सारी चीजें कवर करेगा related to production and related to इसमें टैग टाइम, आपने सुना होगा मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, टैग टाइम, वो सब कुछ इसके अंदर कवर होगा. डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट, इन्वेंटरी, एंड देन अदर टाइप ऑफ वेस्ट लाइक एक्सेसिव मोशन, एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन, scrap, all those things will be covered in this particular module. All right, next. All right guys, अभी तो देखो स्टेप बाय स्टेप पांच डिपार्टमेंट कवर हो गए.
All right. We will repeat it again after I cover this particular module. This particular module is called as new product development. अभी guys, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अब हम अगर किसी ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप हुंडई की बात करते हो, यू नो, आप बात करते हो मारुति की, यू नो, ऑल दिस कंपनीज हु आर मेकिंग कार, इनका हर 2 साल में 1.5 साल में एक नया मॉडल आ जाता है, यू नो, यू ऑल नो दैट, एक नया मॉडल आ जाता है, कंपटीशन है, दे ब्रिंग अ न्यू मॉडल विद अ न्यू इंजन capacity with the, you know, new features in the car and all those things come right after every 1.5 or 2 years, you know, to capture the market. अभी जब ये नया मॉडल आता है और या फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो BS6, यू नो, BS6 का आजकल एमिशन नॉर्म्स के इंजन चल रहे हैं, यू नो, पहले BS5 था, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री BS4 अभी अभी इंप्लीमेंट हुआ है अप्रैल 2021 से, पहले BS3 था। डेवलपमेंट ड्यू टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स, यू नो, ड्यू टू द कंपटीशन, नया मॉडल नया वेरिएंट निकल, करता कौन है? कभी सोचा है ये सब करता कौन है? ये सब करने के लिए अलग से टीम होती है, यू नो, एंड दिस इज डन इन एवरी इंडस्ट्री, यू कैन रियलाइज, यू नो, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन हर इंडस्ट्री में हो। ये सब करने के लिए जो डिपार्टमेंट इन सब चीजों का टेक केयर करता है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइनिंग करता है, यू नो, वेंडर डेवलपमेंट करते हैं लोग, यू नो, क्वालिटी के लोग भी इसके अंदर होते हैं, सोर्सिंग के, परचेजिंग के लोग भी होते हैं, डिजाइन के भी होते हैं, यू नो, ऑल दिस पीपल मेक अ टीम, यू नो, और ये हर कंपनी में होता है, छोटी बड़ी हर कंपनी में होता है। दिस डिपार्टमेंट इज कॉल्ड एज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ओके, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर ये जो टीम, दिस इज द कोर, दिस इज द बेस of new product development. APQP, Advanced Product Quality Planning, PPAP, production part approval process, and then cost reduction, cost optimization techniques. जिसको हम VA, कहते हैं, you know, all those things happens in this part, cost optimization, target costing, all those concepts. तो ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हो ना, तो वो सारा एस्पेक्ट कवर हो जाता है, and there is a great need, great demand all over the world about the people who knows these 3 concepts in detail. Okay, जो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, of course with the help of case studies. Okay, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट गाइस, अगर आप देखोगे अभी तक हमारे चुके जितने भी बेसिक डिपार्टमेंट इंडस्ट्री में होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, किसी भी कंपनी में होते हैं, हमने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करी, R&D की बात करी, डिजाइन की, क्वालिटी की बात करी, वेल्डिंग की, प्रोडक्शन की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, इवन परचेजिंग की भी बात कर ली, राइट। ये सारे डिपार्टमेंट कवर हो गए, इसके बाहर कोई और डिपार्टमेंट रहता नहीं है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, राइट। अभी कुछ डिपार्टमेंट रह जाते हैं, जैसे फाइनेंस है, स्टोर्स है, इन सब की जरूरत नहीं है आपको, यू नो, nobody wants to go to those departments directly, right? You will start with all these departments only that I just mentioned. Okay, तो वो तो पीछे जितना मैंने बताया उसके अंदर कवर हो जाएगा। एंड माइंड यू, ये सब करने के लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा, ये 5 से 6 महीने का कोर्स है, एंड विल एक्सप्लेन दैट लेटर, आई जस्ट वांट टू मेंशन इट हियर। ये इतना आसान कोर्स नहीं है, आओगे तो सोच के आना, क्योंकि हम लोग आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से रगड़ेंगे, यू नो, you will have to do hard work if you want to get all those skills from us. Okay, and many more mentors who will be coming to teach you. Okay, so just wanted to mention that. All right, okay, तो वो बेसिक जो डिपार्टमेंट्स हैं, बेसिक डोमेन्स कवर हो गई हैं। इसके बाद हमने 2 मॉड्यूल्स और रखे हैं इस कोर्स के अंदर, लुकिंग एट द फ्यूचर एंड लुकिंग एट द कोलैबोरेशन ऑफ ऑल दिस डिपार्टमेंट्स, यू नो, दैट रिजल्ट्स इनटू ऑटोमेशन। अगर आप देखोगे सारी इंडस्ट्री आजकल ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, यू नो, मैनी इंडस्ट्रीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दैट since last 5-10 years. You know, some people are doing that for many decades. You know, some people have just started doing it. आपने इंडस्ट्री 4.0 का नाम सुना होगा, डिजिटलाइजेशन का नाम सुना होगा, आजकल हर जगह डिजिटलाइजेशन हो रहा है, यू नो, डेटा एनालिसिस के थ्रू काम होता है, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू नो, ऑल दोस। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए एंड departments, how those all departments work in themselves, you know, design का, quality का, welding का, you know, lean वाला, production वाला, ये सब मिलके ऑटोमेशन में जब हेल्प करते हैं कंपनी के, ऑटोमेशन कंपनी के अंदर ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करने के लिए, डिजिटलाइजेशन इंप्लीमेंट करने के लिए, यू नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री 4.0 के लिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए 2 मॉड्यूल्स और डाले गए हैं इस कोर्स के अंदर, यू नो, एक है मैकेट्रॉनिक्स और दूसरा है रोबोटिक्स। ये दोनों कोर्स का अलग अलग
अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं, जैसे 6 सिग्मा का सर्टिफिकेशन होते हैं ना, वैसे इन दोनों के भी अलग से कोर्सेज होते हैं। बाहर अगर आप जाके देखोगे, गूगल पे देख लो, ये 2 कोर्सेज भी यहाँ पे डाले गए हैं। एंड दीज 2 कोर्सेज विल बी टॉट टू यू बाय प्रोफेसर अश्विन, who has more than 15 years of experience in teaching all these 2 courses. You know, he has extensive industry experience also. He has extensive teaching experience also. So you can imagine what level of talking will be there when he will be discussing with you all these ones. I think Ashwin sir is there with us today. Ain't it? Yes, sir. Yes, sir. Ashwin sir, are you here? Yes, sir. Yes, sir. I'm there. Thank you. Yes, yes. So over to you, Ashwin sir. Please take the students to explain these 2 courses. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you, Saurabh sir. Thank you very much. So, dear students, very good evening. Just you got to know that what are the various department in any industry. You may consider the example of small scale industry, large scale industry, or medium scale industries, right? As per that types of industries are concerned, even if you take any type, there is all this sort of departments are there. You may go to the quality department, you may go to the purchase department, design department. All departments are there, and they have their certain tasks to be performed, right? Now your task is, whenever you are learning all these basic things, we need to have the multidisciplinary approach. That is most important nowadays. You need to have the concept of digitalization. You need to have the concept of automation. You need to have the concept of the artificial intelligence also. Now every industry wants that systems should work independently. Whatever system I am going to design, if I am going to develop one robot which is performing some pick and place task, let us say, so it should understand when to start the system, when to start the process, and when to do that activity. Okay, so we need to provide the intelligence kind of thing. We need to implement the intelligence in it, so that whenever once we have informed to do this task, it can perform. And that is in need of art, that is in need of time also. Industry need the people, those who are having the integrated approach. They can develop the system, they can design the system, they can have the programming part of it, right? They can have automation part of it. I am glad to all respected sir for this session. Okay, so yeah, thank you. So as far as this need of R is concerned, we need to keep the integrated approach in our mind, right? Whenever I'm developing one robotic system, any automation line, you may talk about a specific fabrication shop, right, where you are going to do the activity related to, let us say, especially welding. Now in that case, Indranil sir, I request any participant has unmute, so can you mute them so that it will not disturb? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you. So the most important task is in that welding process also. If suppose your production rate is very high, your demand is day by day increasing, and you wanted to produce that much products, right, by doing the by again implementing the quality, so we can think, or that industry people can think to implement the automation over there. They can have the one robotic application to perform one welding operation. Let us take, it may be the application of arc welding, it may be application of the variety of welding types, right? So whatever may be the welding, arc welding or spot welding, you may take the example of automotive industries, right? So there, suppose they are trying to implement that, in that case they need the people, those who can think on that, how digitalization can be implemented over there, how that system can be considering that aspect, especially when we are considering the most important part over there. Indranil sir, am I audible? Because there is a fluctuation in the network. Yes, sir. Just for a few seconds, you are now it's okay. Yeah. Thank you. So as far as that the aspect is concerned, thank you. So most probably what we are talking about, mechatronics itself is a vast field, where we are considering all the sub departments, where we are trying to implement the mechatronic system design over there. How can I make it automatic? How can I make it independent? How can I make it autonomous? Now it's an era of autonomous vehicle. So in that case also, you need to understand the integrated approach. How I can integrate digital electronics with mechanical,
right? Or how can I integrate electrical engineering with the mechanisms which will develop by the mechanical engineers, right? This integrated approach. And in that also, how can I do the programming part? How can I design or how can I develop the algorithm so that it can work independently? How can I design, how can I develop that program where the sequence of operation is fitted over there, controller is there to control all the activity, right? So this kind of thinking, this kind of approach we are going to discuss during this training program, especially, and you will improve your skill such a way that you will get more opportunities. See, our aim is not to develop the candidates or aspirants or the students or engineers, not just to get the job. We are utilizing this training, the approach is to develop your career. See, you are not seeking the job only. Our aim is to set your career. You need to have, yes, this many approach I have discussed during this training. Now I can prioritize where I'm interested and opportunities are there. So you can select your opportunity. You can go for that, right? That is the most important approach. So in mechatronics, whatever the content is there, it is going to be discussed. But I would like to tell you, mechatronics is the integration of various engineering field itself, where we are going to talk about the basics of mechanical engineering, digital electronics, electrical engineering, computer science, where programming part is more, control system engineering, where we are developing the system which are under control, right? That is most important part. ये सब चीजें हमें सीखनी है उसमें. आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा, right? लेकिन ये skill add on करने हैं just to match the requirement of the industry. इंडस्ट्री क्या चाहती है? ठीक है, मैंने मैकेट्रॉनिक्स पढ़ा है, लेकिन मैकेट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन में आपको अप्रोच आपका कैसा है? आपको सेंसर्स मालूम है क्या? आपको एक्चुएटर्स मालूम है क्या? राइट? आपको कंट्रोल सिस्टम डेवलप करनी आती है क्या? Right? Can you design the control system so that whatever problem has been defined or problem statement is there, can I overcome that with the help of my solution? Are you getting this approach? We are highlighted more because this is the need of industry nowadays, wherever you go, right? You may talk about any industry. You give me the example of industry, I will typically tell you what is the scope over there. Okay, so this mechatronics content we are highlighting more, which is the need of our and which is the future. Every department in the industry wanted to implement the atomization over there. They wanted to design the independent systems. They can take care of the specific activity in the specific department. You may talk about machine shop, you may talk about paint shop, you may talk about store, you may talk about purchase department, you may talk about design department, you may talk about new product development. That is the new era, right? You need the innovative mindset over there. The system is there in front of you in the industry. How can I apply my innovative mindset to develop it or to make it advance, so that whatever activity it is getting done, it will increase the performance to doing that activity. That innovative mindset is the need of hour, and every industry want that. And one more important point is industry need the troubleshooters. Troubleshooters means those who know the root cause. And to find out the root cause, first of all, the fundamental knowledge has to be clear. Okay, now fundamental knowledge आप किसका लोगे? आपकी कोई तो डिग्री है, आपने डिग्री की है, उसमें आपको एड-ऑन स्किल करने हैं, so that you should become industry ready. That is our motto, that is our objective. And for that purpose, these many things we are adding in you as a skill development, and that's a skill age, right? So this is the one part where we are highlighting more and more on mechatronic system design. What is the difference between fully mechanical system and mechatronic system? You will get to know how to convert the core mechanical system, which is conventional mechanical system, into mechatronic system. Do we have the scope over there? Yes, we have. We can. It is the concept of retrofitting again. We need to retrofit. Again, we can have the scope. We can develop that systems also. Okay. So this is all about mechatronics. You can see the syllabus. In syllabus, we are highlighting the fundamental, but we are giving the approach to that with the case studies. And that is recent case studies which are developed, which are already implemented in the industry, and they are taking the advantage of that. That case studies we are adding, and we are giving the assignment to related the current development only. Means we are giving the case studies, we are giving the assignment to you, which will be the industry oriented again. And that is the most important advantage of this training. Okay.
So I will request to Indranil sir to please go on to the next slide. Yeah. Now, one more module dedicatedly we have attached in this training program, which is talking about the robotics. What robot is, what is the meaning of robotics, when it is born, it was involved first of all. See, basic thing we are highlighting, but our main task is how to know the fundamentals of robotics. When I am saying what is kinematic linkage, when I am saying inverse kinematics, when I am saying forward kinematics, when I am saying dynamics, what does it mean? In case of robotics, especially, that we need to highlight how the transformation is getting represented in terms of matrices, that we are going to see, and that is actual kind of engineering in the field of robotics. आप जब भी kinetic की बात करते हो, as far as the kinetics, kinematics and dynamics are concerned, kinematics of the robot, dynamic of the robot, right? Kinematic is totally talking about the control of the activity which is carried out by that robot. How to control that, and after that, once you control, specifically how you are taking it granted to make the system stable, that is talking about the dynamics. So how we are correlating the kinematics with the dynamics, that we are going to discuss in detail in this module, and which is the need of hour. You might have observed in all the industries, they are trying to implement the robot over there, right? For inspection purpose, there is a robot, right? For counting purpose, there is a robot, right? For packaging purpose, there is a robot. So every industry trying to implement the robot over there. Okay. But one thing is, keep in mind, all of you keep in mind, we are not here to replace the human being by the robot. No, we are here to reduce the human efforts by the robot. And that has to be understood. And that approach we are keeping in the training, so that you can also think in that your innovative mind you can apply, where you can reduce the human efforts. Okay, we are not replacing the human being with the robots. Are you getting my point? So that approach also we are adding. So as I have already mentioned about the representation technique we are talking about, then path control, manipulator path control, how we are going to control the path. Suppose for one dedicated design manipulator, whatever robotic manipulator is there, and that manipulator, I have designed some path. Okay, so the manipulator path control, how I am achieving with the help of kinematics, that again has to be taught. Okay, आप path control कर रहे हो, आपने बताया कि A location से B location मुझे जाना है. Okay, but what will be the path? How we are going to perform that path? Are you getting? Okay, are you moving rapidly? Are you going towards straight interpolation or circular interpolation? Depends. Are you getting? So that has to be defined again. Again, which kind of programming method we are adopting? Are we using a teaching pendant, or we are making it fully autonomous? Right? As far as autonomous robots are concerned, that aspect is also added over here. As far as the types of robots are concerned, various kinds of things we are discussing, and especially again, we are focusing more on the assignment part of it and case studies. Once I am telling the types of robots are these and this, methods are these and this, I will give the case study, or we are giving the case study such a way that where you can implement. If I am saying teaching pendant operated robot, okay, one autonomous robot, what is the difference as far as the programming part is concerned, and which kind of controllers are used over there to control all the activities, that we are going to highlight more, because industry wants this. Once you enter into the industry and you are talking in that term, industry will understand this person knows the fundamental. So they can give the task to implement the robotic kind of system for performing any dedicated activity. Getting my point? So all this concern we are adding by keeping the priority as an industry point of view. We are giving the priority for industry, because finally you are going to set your career in the field of industry. Right. So what industry demands, what is current trends as far as digitalization is concerned, especially IoT is concerned, how we are treating IoT or implement the IoT in robotics also, that also we are going to discuss. Okay, IoT is the thing where Internet of Things we are going to plan, wireless technologies. I am sitting over here, how can I operate the robot which is on shop floor? How can I see the parameters which I have set over there? And it is up to the mark or not. If it is not, how can I control by sitting in the control room? Are you getting? Okay, there are supervisory controls, but nowadays we are implementing, or we are expecting
IoT based technologies. Okay, wherever I am, I can control all the activities. Okay, it's a Wi-Fi based and the wireless technologies we are adopting over there, and we are operating all the systems. It may be robot, it may be machine, it may be in a system which is working in the industry. That all aspect, by considering towards the robotics, we are going to discuss. Okay, so that is also plays very much important role. Okay, so mechatronics, robotics, all this individual domain we are going to discuss, right? As far as the part of current trend, or you can say industry revolution as an industry 4.0, the people are talking about industry 5.0 also nowadays. It's the impact of pandemic. Pandemic has given much lesson to us. We need to think futuristic approach. We need to forecast what will be the need of tomorrow, what will be the need of after 1 hour, 1 week, you can say 1 month, 1 year also. We need to plan accordingly, forecast, because every manufacturer nowadays, if you take the example of automotive industries, right, they're launching new vehicles with new facilities, with new features, with new technologies. You may take the recent example, Tata Motors has launched Tata Punch, you might have observed, right? This is the vehicle which has most safety features, and it is listed out in the list of the most safe vehicle also. Tata Punch, you might have heard the advertise is going on, and the people are purchasing that vehicle, they are booking also just because of the safety features, right? The Tata Motors 10 years back and nowadays Tata Motors, there is a huge difference. You can take the example of Nexon, you can take the example of Tata Harrier, you may take the example of recent this Tata Punch, Ultras and all. Why am I talking this? Because they have implemented the digitalization over there, they have implemented robotics over there, they have implemented IoT also. Okay, so all this example, because everything is related to industrial example only. If we talk in terms of industry, you can develop yourself and you can adopt that knowledge in your career, in your industrial experience. Whenever you are entering into the industry, then you can grasp the industrial aspect very fast and grow as per your requirement. And for that purpose, the best suitable course we have designed. And every time we are updating, it is not the case we have designed the syllabus and since from last 6 months, 1 year, we are following same. No, we are adding in that because technology is getting changed. After 1 month, there is a new technology. Nowadays, it is happening. So according to that, we need to highlight the aspects also. We need to add the points in that also. Okay, so that all points we are covering into this training program. Okay, so move towards next slide, please. Yeah, so as far as the various domains covered, you have already seen about the quality department, sourcing, supply chain, design, production operations, industrial engineering, new product development, automation. All these domains, the specific domains we are covering into the syllabus. That is the specialty of this course. And we are highlighting more on case studies, right? The typical example is, if suppose I'm giving the AutoCAD drawing to you, you may take the AutoCAD drawing on a A4 sheet, right? And you are observing it. Okay, now observation is different. Reading the drawing is totally different. You should know the symbols of it. You should know how it is reading of the drawing is something different. Okay, as far as machine drawing concept is concerned, what are the allowances we are implemented over there, what symbols, okay, third angle, first angle method, we need to understand. Industry needs, because industry expect, you are engineer, you should know that. Okay, so we are highlighting more so that you can read the drawing carefully in the industry. We are focusing that also. As far as your first mechanical system design is concerned, or design course is concerned, we are highlighting more on that as far as the drawing is concerned, because drawing is the most important aspect in the industry, and industry expect you know the basics of drawing, so proceed accordingly. So industry is expecting means you need to fulfill the requirements. Then and then only industry will ready to absorb. Try to understand opportunities are there. It's your duty to adopt the skills first of all. How you are adopting the skill and how you are exploring that skill in front of industry people, that is the need of time. Once you do that, you have the opportunities. In that, you can approach, you can select where I want to go, right? I'm interested in fully design, I'm interested in robotics, I'm interested in fully automation, I'm interested in quality department, right? Or I'm interested in fully machining shop. It may happen. Everybody is having their own interest. So you find out it
adopt the skills and go ahead. That's the objective of this entire course. Okay, can we move towards next slide? Yeah, so the difference between, actually we are not here to give the differentiation, but we can definitely talk what will be the difference once you complete this training, the regular engineer versus GET age engineer. Through this skill age program, when we are getting pass out, or once you complete the entire course, you are getting the feel of it. The engineer, just pass out engineer, and the engineer, those who have completed with this additional course where it has adopted the skill which is industry relevant, and that increase the weightage of your biodata, you can say resume, and that is the need. And we are developing such a way that you can have the opportunity in the industry. You can take you can grab that opportunities, and that is our motto. For that purpose, we are always updating. We are talking more on the case studies which is related to the industry and recent technologies which are adopted in the industry. Okay, so we are focusing more on that. Obviously, there is a difference if you compare the regular engineers with GET engineer, because these many domains is adopted in you. You have understood. With the case studies also, you can understand more, right? And we are giving the industrial examples. We are giving the assignments related to industry. Okay, especially for the robotics kind of thing, I'm giving the students to the approach of the industry. I'm giving the direct approach to the industry. Let us say right now, the assembly of Tata Nexon is going on, and there is a one workstation where we have the doors are getting assembled over there. Okay, for that purpose, I wanted to design a robotic application, or I wanted to design an industrial robot. Okay, or robotic arm, you can say, which has 6 degrees of freedom. Okay, how you are going to design this? What factors you are going to consider? First of all, degrees of freedom, then payload capacity, overall body weight, right? What is the reach of that robot? What will be the work envelope? And within that work envelope, how you are going to complete all the activities assigned to that robotic arm? All this aspect we are covering. So you should become industry ready. That is the objective. Okay, and by keeping this in mind, we are talking, the industry people are there, the cascaded people like me, those who are having the experience in teaching, but most relevant technologies related to industry, I'm adopting. And I'm percolating, I'm trying my best to percolate it in the students, in the aspirants. And I'm doing it. And I'm getting the results as well. Right? Students are developing their own systems. And that is the biggest satisfaction for the passionate person like me. Okay, so these are the important aspects we are covering, and definitely will feel the difference when you say I'm a GET engineer. Of course, the skill has been added in you whenever you are completing this, and you can definitely say, yes, that skill as I have adopted, I will get more opportunities in the industry. Okay, so this is from my side. I hope whatever questions you have, you can ask at the end. Definitely, Saurabh sir will be there, Indranil sir will be there, and all will be there to answer the queries. So this is from my side. Over to you, Indranil sir. Thank you. Thank you, sir. One more thing, sir. How this course will help electronics and electrical engineer? Can you please elaborate? Yes. Thank you, Indranil sir. And this question is basically, we can say, the question which is randomly asked. Many times this question has arisen just because the reason is you are from core electronic background, or some people are there, those who are from core electrical background. Now, electrical base is, right? How that electrical base or digital electronic base can be integrated with the industrial application. Let us say I wanted to design one mechanism. I have defined, I got one problem definition. Yes, this and this problem is there, and you find out the solution. Now, in that case, being an electrical engineer, I know I'm expert in electrical engineering, right? I know the concept of motors. I know the types of motors. Is it an induction motor? Is it a synchronous motor? Is it a DC motor? In again, induction motor, I'm going for 1 phase or 3 phase, depends, because it is depending on the starting requirement of torque. Now, you're expert in that, being an electrical part. But when you are going to integrate this approach to the mechanical systems, because mechanized systems are there may be a robotic system, there may be automation line.
In that case, this course will give you in-depth knowledge how electrical engineering can be integrated with mechanical as well as related field. As far as manufacturing industries are concerned, that is the most important advantage you will get through this course. I hope I have delivered the answer. Indranil sir. Yes, sir. Yes. Thank you. Thank you. I think next slide, please. Thank you, all the mentor, Professor Ashwin Kumar Mahendrakar sir, for this beautiful explanation regarding mechatronics, regarding robotics, how mechanical and electrical and electronics, all these engineering domains are interrelated. What is the synergistic approach and all, and how this knowledge you can implement into the current industry, that is manufacturing industry, core engineering industry. Now hiring trend. Next slide. Okay, this course, this GET Edge will prepare you for the all domain. जैसे आपने देखा, इसमें ऐसा कुछ डिपार्टमेंट बचा नहीं है. Every department is covered, from production, manufacturing, quality to R&D, design. Every department is covered. So automobile sector, mechanic, medical sector, material processing, robotics, manufacturing, aerospace, ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही बचा नहीं है जो ये ट्रेनिंग करने के बाद आप एलिजिबल नहीं रहोगे अप्लाई करने के लिए. यू आर eligible, you can apply to all the domain, all the sector, all the industry. Next slide. Companies currently hiring the GET Edge engineers, that is fresher as well as experienced. All the manufacturing industry, all the manufacturing companies like Whirlpool, Mahindra, Godrej, Ford, Tata Motor, Cummins, Siemens, JCB, and Pari Robotics, as well as many other companies. बहुत सारे कंपनीज है जिनके साथ कोलैबोरेशन है स्किल एज का. यहाँ पे एक जगह पे DRDO आपको दिख रहा है, तो समवन में कोई स्टूडेंट्स ऐसे सोच सकता है कि DRDO कैसे आपने यूज किया सर. यहाँ पे जो स्टार्टिंग के स्लाइड में एक चीज कहा गया था कि one of your mentors is Dr. GC Singhal sir. Dr. GC Singhal sir is a former scientist of BARC, Bhabha Atomic Research Center. So सर के साथ जब आप इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स एंड ऑल जब डिस्कशन होगा, so at that time आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन उस लेवल पे कैसे किया जाता है वो भी डिस्कशन किया जाएगा. सो यू कैन अप्लाई ये ट्रेनिंग, ये सिलेबस करने के बाद आप उस एग्जाम के लिए भी रेडी हो सकते हो, आप एग्जाम दे सकते हो. यू आर मतलब इस डिजाइन को उस तरह से डिजाइन. Someone please, Aditya Mishra, please go on mute. I can mute you. Okay. Next slide, please. Now the important slide. अभी आपको पता सबसे important now. ठीक है, सिलेबस हमें पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि कौन से इंडस्ट्री है जहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं. नाउ द प्रिपरेशन, हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करना है इस सिलेबस का. प्रिपेयर आगे जाके इन फ्यूचर जब हम ट्रेनिंग में आ जाएंगे तो प्रिपरेशन कैसे होगा. नेक्स्ट स्लाइड. Okay, fine. Very interesting. 100 plus hours of live online classes, 70 plus modules. These are the GET Edge program detail. 100 plus hours of live online classes, 70 plus modules, 100 plus hours of practice, 80 plus hours of case studies. Very important. Case studies ही नहीं करवाया जाता कॉलेजेस में एंड ऑल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो करवाया जाएगा. 300 प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चन है, ये पूरा ट्रेनिंग होगा. ट्रेनिंग होने के बाद आपके मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाए जाएंगे. स्किल एज की तरफ से आपको 365 डिग्री अप्रोच में ट्रेनिंग होगा आपका. और ये वो क्वेश्चनरीज है जो इंडस्ट्री में पूछा जाता है. हर इंडस्ट्री के, हर कंपनी के एक पैटर्न होते हैं क्वेश्चंस के. वो नॉर्मल कॉमन पीपल, कॉमन पब्लिक के पास वो होता नहीं है. बट वी हैव दैट पैटर्न, वी नो दैट पैटर्न. आपको उस पैटर्न में तैयार करवाया जाएगा, उसके बाहर कुछ है ही नहीं. 60 प्लस आवर्स ऑफ सॉफ्ट स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई सॉफ्ट स्किल? टेक्निकल स्किल्स तो बहुत लोगों के पास होता है, बट स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू एक्सप्रेस देयर नॉलेज. एंड दिस सॉफ्ट स्किल डजंट मीन स्पीकिंग इन इंग्लिश. दिस सॉफ्ट स्किल मीन्स effective presentation, professional email writing, conflict management, client interaction, time management.
ये सब चीजें आपको सिखाया जाएगा। सो जस्ट इमेजिन, जब आपका डिजिटल सीवी स्किल एज के जो कैंपस टू कॉर्पोरेट रिलेशन टीम है, पूरे ट्रेनिंग होने के बाद आपके मॉक इंटरव्यू होगा, आपके डिजिटल सीवी बनाया जाएगा, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया जाएगा, जहां पे ये सारी चीजें लिखा रहेगा कि ऑल दिस टेक्निकल नॉलेज, यू नो प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग, यू नो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, क्लाइंट इंटरेक्शन। सो योर सीवी, सोच लो आपके सीवी नॉर्मल दूसरे स्टूडेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है, एंड आप बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाओगे कंपनीज के लिए। नाउ नेक्स्ट थिंग, 6 मंथ एक्सेस टू ऑनलाइन कंटेंट, दैट इज पूरे ट्रेनिंग हो जाने के बाद, जब आपका प्लेसमेंट हो गया उसके बाद भी 6 मंथ का आपको एक्सेस रहेगा। और ये ऑनलाइन कंटेंट मींस हाउ, स्किलेज का ऐप आपको दिया जाएगा, ऐप दैट इज दैट नेम इज स्किलेज पर्सोना। गूगल प्ले स्टोर में आपको वो ऐप मिलेगा। उस ऐप का काम क्या है, जो भी लाइव ऑनलाइन क्लासेस होगा, क्लास होने के बाद उसका रिकॉर्डिंग ऐप में जाता है, ताकि आप उस रिकॉर्डिंग को बार बार देख सको, पढ़ाई कर सको, रिवाइज कर सको। नोट्स, पीपीटीज, स्टडी मटेरियल भी आपको ऐप में मिलेगा। एंड हर टॉपिक खत्म होने के बाद आपका टेस्ट होगा। एवरी टॉपिक खत्म होने के बाद टेस्ट, असाइनमेंट, और ये टेस्ट का जो स्कोर, असाइनमेंट का जो स्कोर, अटेंडेंस, ये सब क्यूमुलेटिव होके आपका स्किल पॉइंट होगा। एवरी मंथ स्किल पॉइंट आपका बनेगा। ये स्किल पॉइंट भी आपके ऐप में दिखाई देगा कि मेरा इस मंथ का स्किल पॉइंट ये है। जो टेस्ट होगा वो भी ऐप थ्रू होगा। ऑल दिस थिंग्स, 12 मंथ प्लेसमेंट असिस्टेंस, इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में बताऊंगा। मींस इस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी जब तक जॉब नहीं मिलेगा तब तक आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्वियसली आपको ये सुनना है कि व्हाट इज द एंगेजमेंट मॉडल एंड ऑल। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। टिल नाउ अगर किसी का कोई सवाल है तो चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। एंगेजमेंट मॉडल हम जस्ट 1-2 सेकेंड में शुरू करेंगे। Thank you for your patience. It shows that you are very much serious about your career. So the next slide, please. Now the engagement model. Step 1, आपने register किया, आज आप इस session में हो, that is your induction session में हो, that is your step 2. Step 2 और step 3 के बीच में होगा, that is your selection test. वो क्या है मैं सब कुछ बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में बहुत डिटेल। स्टेप 2 और स्टेप 3 के बीच में ये सेशन खत्म होने के बाद आपको एक फीडबैक लिंक दिया जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक लिंक आपको फिल करना है, देन ओनली यू विल गेट द टेस्ट लिंक। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मींस सिलेक्शन टेस्ट। आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना है। टेस्ट अगर टेस्ट में क्या है क्या नहीं सब बताओ। टेस्ट क्लियर होने के बाद आप डायरेक्टली स्टेप 3 में आते हो, दैट इज लर्न एंड प्रैक्टिस द लेटेस्ट कोर इंजीनियरिंग टेक्निक्स थ्रू प्रोजेक्ट्स एंड मेंटरिंग। स्टेप 4 फाइनली आपका ट्रेनिंग शुरू हो गया। उसके बाद प्लेसमेंट असिस्टेंस, आवर हायरिंग टीम विल प्रोवाइड प्लेसमेंट असिस्टेंस फॉर द 12 मंथ, जब तक आपको जॉब नहीं मिलता तब तक। एंड स्टेप 5 योर फाइनल, हाउ मच, दैट इज योर ट्रेनिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस एंड ऑल। दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से सुनना। स्टेप 5,
नेक्स्ट स्लाइड, जैसे हम दिख रहा है यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग, हाउ टू अप्लाई कैरियर काउंसलिंग, इंडक्शन सेशन जो आप आज यहाँ पे हो, सिलेक्शन टेस्ट, एप्टीट्यूड, टेक्निकल, पीआई, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कोर्स बिगिन, सिलेक्शन टेस्ट, एप्टीट्यूड, टेक्निकल, पीआई, ये भी मैं और डिटेल में बताऊंगा। वन क्लिक, बहुत ध्यान से सुनना अभी, बहुत ध्यान से। ट्रेनिंग फी आपसे अभी नहीं लिया जाए। राइट नाउ यू डोंट हैव टू पे एनी ट्रेनिंग फी। ट्रेनिंग फी ट्रेनिंग हो जाने के बाद, द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 4 to 5 months। 4 to 5 month के बाद जब आपका ट्रेनिंग हो जाएगा, उसके बाद आपका प्लेसमेंट ड्राइव होगा। प्लेसमेंट ड्राइव होने के बाद जब आपको प्लेसमेंट हो जाएगा, देन आपको ट्रेनिंग फी देना है। वो भी ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट हो गया तो कल ही आपको ट्रेनिंग फीस देना है, वो भी आप आपके सैलरी से ईएमआई के तौर पे नेक्स्ट 12 मंथ के ईएमआई पे करोगे आपका ट्रेनिंग। नाउ कंसेंट्रेट, कितना करना है, क्या करना। नेक्स्ट स्लाइड, पे ओनली आफ्टर जॉब। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, पे ओनली आफ्टर जॉब। जॉब मिलेगा तो ही पे करना। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें, हर चीज बहुत इलाबोरेटली, बहुत क्लियरली दिया हुआ है। अब मैं फिर से इस चीज को दोहराऊं, ट्रेनिंग फी, मेन जो ट्रेनिंग फी है वो अभी नहीं देना है। सबसे पहला स्टेप्स है, इस इंडक्शन के सेशन के बाद आपको फीडबैक लिंक दिया जाए, फीडबैक फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद आपके पास टेस्ट लिंक आए, आपको टेस्ट देना है। देयर इज ए 3 राउंड ऑफ, इन दैट टेस्ट 3 राउंड है, टेक्निकल राउंड, एप्टीट्यूड राउंड एंड पर्सनल इंटरव्यू। टेक्निकल राउंड क्या है? 15 मिनट, 15 मार्क्स, 15 एमसीक्यू टेक्निकल राउंड। एप्टीट्यूड राउंड 15 मिनट, 15 एमसीक्यू, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड राउंड एंड 15 मिनट पीआई राउंड। ये तीनों राउंड मिला के, इन दैट 45 टोटल 45 मार्क्स का आपका टेस्ट है। ये तीनों राउंड मिला के आपको 40% स्कोर करना ही है। Then only you are eligible for this beautiful first time ever in India GATE Age training program. Again I am repeating, 40% स्कोर करना ही है। टेक्निकल, एप्टीट्यूड, पीआई, ये तीनों राउंड मिला के। टेक्निकल और एप्टीट्यूड ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन जैसे एमसीक्यू होता है वैसे आपको लिंक आएगा। पीआई राउंड आपका टेलीफोनिक होगा। टेस्ट दिया आपने, टेस्ट क्लियर हो गया, यू आर एलिजिबल, 40% आपने स्कोर किया है मिनिमम। उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन फीस है, हाउ मच? दैट इज अ डिस्काउंटेड स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन फीस, दैट इज 6,000। ओके, ये 6,000 भी आप इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते। रजिस्ट्रेशन फीस। नाउ ट्रेनिंग फीस, जैसे मैंने पहले कहा था, ट्रेनिंग फीस जॉब मिलने के बाद कितना, ये पूरा ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आपके प्लेसमेंट प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यू, एवरीथिंग, आपका प्लेसमेंट ड्राइव हुआ, जॉब मिला, सैलरी पैकेज का जो रेंज रहेगा फॉर द ग्रेजुएट लाइक बीटेक एंड ऑल, उनके लिए बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बीटेक, उनके लिए जो सैलरी पैकेज रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सभी सारे ब्रांच एलिजिबल है, उनके लिए जो पैकेज रहेगा दैट इज 3 लाख पर एनम to 4 lakh per annum, from 3 lakh to 4 lakh per annum। ये जो भी पैकेज रहेगा उसका 20% होगा इसका ट्रेनिंग फी, जो आपको 12 मंथ की ईएमआई में देना है। अब इसको और थोड़ा आसान तरीके से बताता हूं। एज एन एग्जांपल, प्लेसमेंट ड्राइव हुआ, आपको जॉब मिला, 4 लाख का जॉब मिला, रेंज क्या था 3 to 4, आपको 3 लाख का जॉब मिला, पैकेज 3 लाख सीटीसी, उसका 20% होता है 60,000। 60,000 हुआ इसका ट्रेनिंग फी। अब उसको कैसे देना है? जॉब मिला, सैलरी आना शुरू हुआ, सैलरी से आप 12 मंथ ईएमआई के पे करोगे। 60,000 अगर 12 मंथ तक देना है तो कितना होता है पर मंथ? 5,000। सेम अगर 4 लाख का पैकेज मिला, देन 4 लाख का 20% होता है 80,000। अब 80,000 सैलरी आया, सैलरी से अगर 12 महीने तक देना है तो कितना देना होगा पर मंथ? 6,666। सेम फॉर पोस्ट ग्रेजुएट लाइक एमटेक, एमई, उनके लिए मिनिमम सैलरी पैकेज जो रेंज जो शुरू होगा वो 3.5 लाख पर एनम,
to maximum 4 lakh per annum. Same condition, 3.5 to 4, from 3.5 lakh to 4 lakh per. अब 3.5 का 20% कितना होता है? 70,000. अब ये 70,000 हुआ इसका ट्रेनिंग फी, जो आपको 12 महीने तक, आपके सैलरी से 12 महीने तक ईएमआई में देना है. तो हर मंथ आपको कितना देना है? 5,833. 4 लाख सेम, 4 लाख का 20% इज 80,000. 80,000 हुआ आपका ट्रेनिंग फी. सैलरी आया, सैलरी से 12 महीने तक पे करोगे 6,666 रुपीज. अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि सर आपका रेंज जो है ग्रेजुएट बीटेक के लिए 3 to 4 और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 3.5 to 4. अगर किसी को 4 लाख से ज्यादा का जॉब मिल गया, ज्यादा का सैलरी पैकेज मिला, तो आप यहाँ पे क्लियरली लिखा है, देखो 4 लाख के ऊपर अगर जा रहा है तो रेंज वही है. मींस 4 लाख से ज्यादा अगर पैकेज मिलता है, देन यू डोंट हैव टू पे 20% ऑन दैट अबव. 5 लाख का भी पैकेज मिला तो भी 20% 4 लाख पे ही देना है. 4.5 का पैकेज मिला तो भी 20% 4 लाख पे ही देना है. 20% जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 3 to 4 और आइदर 3.5 to 4 पे ही अप्लाई है. क्लियर? फॉर द ग्रेजुएट 3 लाख से नीचे का पैकेज आपको नहीं मिलेगा, आपको ऑफर नहीं किया जाएगा. 3 लाख का पैकेज होने के बाद ही इसका ट्रेनिंग फीस देना है फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट. फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट 3.5 लाख मिनिमम सैलरी होने के बाद ही आपको ट्रेनिंग फी देना है, वो भी ईएमआई. क्लियर? नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो हम क्वेश्चन आंसर में क्लियर करेंगे. 1 टैब प्लीज, एक एंटर कीजिए. नो फाइनेंशियल बर्डन ऑन पेरेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. नो फाइनेंशियल बर्डन ऑन पेरेंट. आपको किसी से कुछ नहीं लेना है. हाँ, देयर इज अ रजिस्ट्रेशन फीस, ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन फीस होना चाहिए, एवरीथिंग. रजिस्ट्रेशन फीस के साथ ट्रेनिंग फीस का कोई रिलेशन नहीं है. राइट नाउ आपको आपके पेरेंट्स से 1 रुपया नहीं लेना है. आप खुद पढ़ाई करोगे, आपको जॉब मिलेगा, आप सैलरी से अपना ट्रेनिंग फी पे करने वाले. नाउ अभी मैं जो बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनो. इस पूरे कंडीशन में आपके साथ स्किलेज का एक प्रॉपर एग्रीमेंट होगा. दैट एग्रीमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू ओनली. क्यों नेसेसरी है आपके लिए? क्योंकि उस एग्रीमेंट में ये लिखा रहेगा, मैंने अभी जो भी बोला, फॉर द ग्रेजुएट मिनिमम 3 लाख पर एनम to maximum 4 lakh per annum. For the postgraduate, minimum 3.5 lakh per annum to maximum 4 lakh per annum. ये सैलरी पैकेज जब तक नहीं होगा, मिनिमम 3 लाख जब तक नहीं होगा, तब तक आप ट्रेनिंग फीस नहीं दोगे. तो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू ऑल्सो. एक कंपनी के साथ आप जब जा रहे हो तो एग्रीमेंट होना चाहिए. इस तरह का मॉडल है जहां पे ट्रेनिंग फीस बाद में देना है. राइट? दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट. मेन जो अमाउंट है वो तो बाद में लिया जा रहा है. यू डोंट हैव टू पे नाउ. वेरी इंपॉर्टेंट. नो फाइनेंशियल बर्डन ऑन पेरेंट्स और एनीबॉडी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ क्वेश्चन आंसर सेशन है. उसके पहले प्लेस स्टूडेंट्स, अभी तक प्लेसमेंट कितना हुआ है? नेक्स्ट स्लाइड. बहुत सारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, बट उसमें से कुछ हाईलाइटेड है, लाइक मानसी पाटिल, यूनिटेक ऑटोमेशन, रुशल गारे, एसएम ऑटो, कार्तिक निकम इन पारी रोबोटिक्स. इट्स अ वेरी फेमस रोबोटिक्स कंपनी. नेक्स्ट स्लाइड. संग्राम, एसएम ऑटो, सुनील, स्टार ऑटोमेशन, अतुल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, and many other students are there who got placed after doing this training. Let us start our journey to become a gate edge engineer. Next slide. क्वेश्चन आंसर सेशन का टाइमिंग है अभी. दीज आर आवर सोशल मीडिया हैंडल. आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हो. स्किलेज के बारे में आपको पूरी तरह से सब कुछ पता चलेगा. मैं नाउ दिस इज द टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर. आप आपके सारे क्वेश्चंस चैट बॉक्स में पुट करो. सौरभ सर ज्वाइन करेंगे अभी. मैं तब तक आपको फीडबैक का जो लिंक है वो शेयर करता हूं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फीडबैक आपको फिल करना है. विदाउट दैट आपको टेस्ट का लिंक नहीं मिलेगा. It's very important to fill the feedback form. मैं चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक पुट कर रहा हूं.
क्वेश्चन आंसर सेशन वेरी इंपॉर्टेंट। सौरभ सर अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप करो, जो भी सवाल है, जो कुछ भी है। शायद सौरभ सर अगर ज्वाइन कर दिए होंगे तो मैं उन्हें होस्ट बना लेता हूँ, एक सेकंड, को होस्ट। Welcome, Saurav sir. Student, please ask your questions one by one. I make Saurav sir co-host. Fine. Okay. Okay. Sir, is there any bond regarding the training period? Because I am awaiting the Hell apprenticeships merit list. Okay. I would like to request Saurav sir, please give an answer of this question. हाँ इंद्रनील, यस, सॉरी गाइस, आई विल बी ट्रैवलिंग अगेन। मैं अभी फिर से ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी भी घर नहीं पहुंचा हूँ। तो इंद्रनील, यू विल हैव टू टेल द क्वेश्चंस टू मी। सो फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, देयर इज नो एनी बॉन्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। इफ यू सी, दिस इज काइंड ऑफ अ फ्री कोर्स, ठीक है। एज इंद्रनील हैज ऑलरेडी मेंशन, ये फ्री कोर्स की तरह है आपके लिए। जब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी तब तक आपको कोई पैसा नहीं देना है, एंड देयर इज नो बॉन्ड। आपको सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो देके एंट्री करनी है, एंड देन यू गेट स्किल्ड, यू फोकस ऑन योर स्टडीज। हमारा फोकस भी आपको स्किल करने का ही रहेगा, जितना भी हमने बताया, सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सब कुछ, हर चीज का स्किल करने के ऊपर रहेगा। आपके टेस्ट किए जाएंगे, असाइनमेंट्स की जाएंगी, आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे बीच में, केस स्टडीज के थ्रू एंड ऑल। Okay, and after 5 months when the course is completed, you will be placed with help of skill edge again, and after getting a 3 lakh salary or minimum 3 lakh salary, you will just pay the fee and go out. That's it. कुछ भी bond नहीं है इसके अंदर, so don't worry about it. Other question, guys? Any other question? Question how? Acha, one question is there. How we link with this robotics, mechatronics with machine learning? Okay, see, किसने पूछा ये question? First of all, this question asked by Mayank Pachuri. हाँ, okay, Mayank, yeah, that's just a very out of kind of a syllabus question, because we never heard this kind of question from the students. See, we are not considering artificial intelligence in this course, but we are doing the basics of that. Basics means mechatronics and robotics, as you have seen, right? तो जब आपको रोबोटिक्स सिखाया जाएगा तो ऑफकोर्स पाइथन वगैरह की बात की जाएगी, राइट? तो ये जो लैंग्वेजेस होती हैं जिसके थ्रू आपका रोबोटिक्स होता है या मैकेट्रॉनिक्स की जो चीजें बनती है, राइट? मैटलैब वगैरह का आपको बताया जाएगा, मैटलैब में कैसे प्रोग्रामिंग होती है, ऑफकोर्स द बेसिक्स ऑफ इट, राइट? तो इसकी हेल्प से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया जाता है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाटएवर यू से, वो क्या होता है, ये सब बेसिक्स क्लियर होने के बाद यू जस्ट टीच योर मशीन व्हाट टू डू, और वो मशीन को टीच तभी कर पाओगे जब आपको बेसिक्स पता होंगे, ठीक है? मशीन खुद तो काम नहीं करेगा, ठीक है ना? तो आपको वो सब लिखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू, ओके? या फिर रोबोट भी आप अगर डिजाइन करते हो, रोबोट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है? इट्स नॉट अ काइंड ऑफ मशीन लर्निंग एज सच, यू गिव इंस्ट्रक्शन टू रोबोट एंड देन इट वर्क्स फॉर यू, राइट? मशीन लर्निंग क्या है कि मशीन खुद से लर्न करे, राइट? रोबोट का जो आउटपुट आएगा या फिर जो भी मशीन का जो भी प्रोसेस का आउटपुट आएगा, उसके थ्रू वो वाला आउटपुट एनालिसिस होने के बाद आपकी मशीन कुछ डिसीजन ले, राइट? ये चीज एग्जैक्टली इस कोर्स में नहीं है। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मशीन लर्निंग आपको इस कोर्स में एग्जैक्टली स्पेसिफिकली सिखाया जाएगा, वो इसमें नहीं है, ठीक है? हम वो चीज कवर नहीं कर रहे हैं, बट मशीन लर्निंग तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए वो सब इस कोर्स के अंदर है, ओके? एज आई जस्ट एक्सप्लेन। तो मशीन लर्निंग कभी भी कोई डायरेक्ट नहीं सिखाएगा आपको,
आप अगर मशीन लर्निंग सीख भी जाओगे डायरेक्ट, तो आपको सिर्फ कोडिंग करनी आती होगी कि मशीन का डेटा एनालाइज करके मशीन को कैसे अपने अपने डिसीजन खुद से लेने हैं। बट वो डिसीजन क्या लेने हैं और कौन सी स्टेज पे वो फीडबैक आएगा फ्रॉम द मशीन टू गेट एनालाइज, वो फीडबैक क्या होगा, ये सारी चीजें किसी ना किसी को तो बोलनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी ना, कि जो कोडिंग करे कोडिंग वाले को बताना तो पड़ेगा ना कि करना क्या है कोडिंग के अंदर, राइट। वो सब इस कोर्स में सिखाया जाएगा आपको, वो सब मतलब उन चीजों के फंडामेंटल आपको इस कोर्स में सिखाए जाएंगे, एंड ऑल दो फंडामेंटल्स आर बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट मशीन लर्निंग थिंग। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, आपको जितना चाहिए था रिलेटेड टू दिस कोर्स। एज सच अगर आप ये बोलोगे मशीन लर्निंग सिखाया जाता है, नो, मशीन लर्निंग इस कोर्स में नहीं सिखाया जाता, बिकॉज दैट इज अ वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट। उस एडवांस कॉन्सेप्ट के फंडामेंटल्स इस कोर्स में है, आप इसके बाद एक मशीन लर्निंग का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, एंड बाय द वे स्किलेज इज आल्सो कमिंग अप विद मशीन लर्निंग कोर्स इन द नियर फ्यूचर, मे बी इन द नेक्स्ट 6 to 7 months। तो वो आने वाला है, मे बी जब तक आपका कोर्स खत्म होगा वो भी आ जाएगा, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। हर चीज इस कोर्स में नहीं डाल सकते हैं ना, एज यू मस्ट रियलाइज, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू से। Pavan Agarwal asked, is self-placed option available, sir? Yes, Pavan, that is called pay and learn. अगर आप चाहते हो कि already you are working somewhere, you want to learn, आपको सिर्फ सीखना है, वो ऑप्शन भी है। आपको जॉब हमारे तरफ से नहीं चाहिए, बट ये कोर्स, ये ट्रेनिंग, सिलेबस देख के आपको बहुत अच्छा लगा, you want to learn definitely, so वो ऑप्शन भी है। एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी एक मॉडल है, लाइक थर्ड ईयर फाइनल ईयर, उनके लिए पूरा 1 साल का भी एक मॉडल है। दिस इज फॉर द फाइनल सेम, जो 7 सेम में है या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, उनके लिए 4 to 5 month। जो थर्ड ईयर में है, मतलब उनके पास पूरा 1 साल है, उनके लिए भी एक मॉडल है, दैट इज कॉल्ड 1 year, दैट इज कॉल्ड हम जिसे प्री फाइनल ईयर मॉडल बोलते हैं, उनके लिए 1 साल का एक मॉडल है। और जिसको सेल्फ प्लेस लेना है कि हमारे तरफ से प्लेसमेंट नहीं चाहिए, उनके लिए भी डेफिनेटली आप पे एंड लर्न कर सकते हो। एंड आपको उसके डिटेल अगर जानना है तो डेफिनेटली यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हो। नो, है वो मॉडल है। As you said, next, Niranjan, as you said about agreement, if I have the program during mid, okay, same question। मैं सौरभ सर हमेशा ये क्वेश्चन के आंसर देते हैं, तो आज मैं इसका आंसर देता हूँ। कुछ अगर होगा तो सौरभ सर भी ऐड ऑन करेंगे। जैसे आपके कहना है कि मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया और 2-3 महीने बाद मुझे कहीं जॉब लग गया और मैं चला गया, तो जस्ट यू टेल मी, आप ही बताओ, आपको कोर्स फीस, जो ट्रेनिंग फीस है, वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जस्ट गिव मी द आंसर। क्योंकि 2-3 महीने में भी आपने बहुत सारे कुछ ऐसे चीजें सीख लिया है, बहुत कुछ सीख लोगे आप। लीन मैन्युफैक्चरिंग, 6 सिग्मा टेक्निक, ये सब कुछ हो जाएगा 3 महीने में। क्वालिटी टेक्निक हो जाएगा, वेल्डिंग टेक्निक टेक्नोलॉजी हो जाएगा। तो आप ही बताओ क्या करना चाहिए? जस्ट गिव मी द आंसर। निरंजन। यस, देखो आपने खुद ही आंसर दिया, यस, सो डेफिनेटली, और आपने आपका आंसर खुद ही दे दिया। ओके, करेक्ट, क्लियर। सौरभ सर, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, इफ यू वांट टू ऐड। No, I just want to add one thing। मैंने ये एक्चुअली पहले नहीं बोला, because I got a call from office, तो मुझे जाना पड़ा था बीच में। Guys, कुछ लोग इस कोर्स को ना सिर्फ प्लेसमेंट के नजरिए से देखते हैं, और I see many people joining in this course। अभी आपका 6th बैच बनेगा, 5 batches are already running। Imran, can you please mute everyone else? Yes, yes sir, yes sir। Okay, so हाँ, so what I was saying is कि अभी 5 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, 5 batches are already there। We have just started this course in June, July। Okay, जुलाई में आई थिंक शुरू हुआ था इसका पहला बैच, and then every month we are adding 1.5 kind of a group, right? हर महीने 1 से 1.5 ग्रुप बनता जा रहा है। 5 कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, you will be 6th बैच, ठीक है, जो अभी इस इंडक्शन के बाद खत्म हो जाएगा। ओके, तो लगभग इसके अंदर 100 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। ओके, इट इज अ प्रीटी न्यू कॉन्सेप्ट, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, आज तक ऐसा कॉन्सेप्ट कोई लेके आया नहीं है। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू स्किलर्स कि वो ऐसा कोर्स, ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया जहाँ पे सब कुछ सिखाया भी जाएगा और उसका पैसा भी बाद में लिया जाएगा, यू नो, आफ्टर यू गेट
मनी यू पे मनी, यू नो, एज सिंपल एज दैट। और ये कोर्स फी भी अगर आप बाहर जाके देखोगे ना, मिनिमम 2.5-3 लाख का ये पूरा कोर्स पड़ेगा, अगर आप इसके कंटेंट्स को अगर गूगल पे सर्च करो जाके, यू नो, यू डू इट फ्रॉम एनीवेयर, यू नो, आई चैलेंज यू। ये एक 6 सिग्मा का सर्टिफिकेशन ही 25,000 का होता है यार, ठीक है। लीन 6 सिग्मा का अलग होता है, जैसे मैंने आपको कहा, वेल्डिंग के अंदर जितनी चीजें उनके सर्टिफिकेशन अलग अलग लेवल के होते हैं, यू नो। तो व्हाट आई मीन टू से, many students who have joined in these 5 batches are those who came here just to build their career. कुछ लोग आए हैं ऑफ कोर्स जॉब के लिए, कुछ लोग आए हैं यू नो नॉलेज के लिए, और कुछ लोग आए हैं करियर बिल्ड करने के लिए। बिकॉज आप एक चीज सोच के देखो, अगर आपको आज बैठे बिठाए पता लग जाएगा, यू नो, कि इंडस्ट्री में कल मैं जब जाऊंगा इस डिपार्टमेंट में क्या होने वाला है, मुझे क्या करना पड़ेगा इस डिपार्टमेंट में जाके, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू प्लान अकॉर्डिंगली। आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, मुझे ना डिजाइन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, आई थिंक आई विल बी मोर पैशनेट अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट डिपार्टमेंट। तो आप वो डिमांड कर सकते हो, आप जब भी इंटरव्यू दोगे तो आप वो डिमांड कर सकते हो कि नहीं, मुझे डिजाइन में नहीं जाना है, मुझे कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट में जाना है। तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू शेप योर करियर, टू डिसाइड योर करियर। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। कुछ लोग इस तरीके से भी सोचते हैं, मुझे लगता है कि सबको इसी तरीके से सोचना चाहिए। जॉब तो लगी जाएगी अगर ये कोर्स अच्छे से कर लोगे तो, एंड जॉब तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, बट थिंक अबाउट दिस कोर्स फ्रॉम द करियर पर्सपेक्टिव। I just wanted to add that in the name to tell everyone what I was thinking. Yes, sir. Thank you, sir. Manoj, sir, there is individual certificate for every course or not? Manoj, there is a single certificate where everything is mentioned. And आपके पास ब्रोशर होगा, ब्रोशर के एंड में देखो उस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। One thing written in the above, 100% employability certificate. It's a big thing. सर्टिफिकेट में ये चीज लिख के देना। So Manoj, yes sir. One thing in the name, Manoj, if you want to come for the certification, please don't come, क्योंकि you will be kicked out. ठीक है, I will be very blunt. Okay, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सर्टिफिकेट्स के लिए आते हैं and they all have been kicked out. ठीक है, I'm not saying that you are coming for certificate. I'm just saying, ठीक है, I'm just telling the truth with 100% honesty. कोर्स में आ रहे हो तो सोच समझ के आना, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, असाइनमेंट्स टाइम पे देनी पड़ेंगी, हर हफ्ते 8 से 10 घंटे की क्लासेस होंगी। ठीक है, सारी क्लासेस ग्रुप के हिसाब से होंगी, टाइम पे होगा, मतलब मोस्टली द क्लासेस हैपन ऑन सैटरडे एंड संडे। आई थिंक किसी ने ये वाला सवाल पूछा था इन्होंने, सो लेट मी आंसर दैट। ये क्लासेस मोस्टली सैटरडे संडे होंगी एंड दैट टू इन इवनिंग ओनली। ठीक है, संडे को मॉर्निंग में हो सकता है रख दे, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप। ओके, एंड वीकडेज में भी आपकी क्लासेस अगर होंगी 1-2 दिन तो वो रात को ही होंगी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नहीं बोलूंगा, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग, whoever is joining this course, you know, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है किसी छोटी मोटी कंपनी में, एंड ऑल दैट, you know, they want to build their career, they want to understand the things, and go to a better company also, get placed in a better company. तो उन सबको ध्यान में रखते हुए, ग्रुप को ध्यान में रखते हुए, ग्रुप कैसा बनेगा आपका, कि उसमें अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं नहीं है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपके ग्रुप का टाइमिंग भी डिसाइड होगा। ओके, तो अगर आप, तो रिपीटिंग अगेन, अगर आप सर्टिफिकेशंस के लिए आ रहे हो इस कोर्स में तो प्लीज मत आओ, यू नो, क्योंकि आप फिर अगर ऐसा माइंडसेट लेके आओगे ना कि आपको सर्टिफिकेट करना है, मेहनत नहीं करनी है, यू नो, सर्टिफिकेट दिखा के कि नौकरी ले लोगे, तो गो समवेयर एल्स प्लीज। बाहर है कंपनीज, ऐसी नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे सर्टिफिकेट, आप मिलेंगे, लेकिन अलग अलग मिलेगा, हाँ, एज आई ऑलरेडी मेंशन, और वो कॉस्टली रहेगा। बट अगेन, इफ यू वांट टू लर्न, प्लीज कम। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि ऐसे बच्चे आए, जो ऐसे स्टूडेंट्स आए, वर्किंग प्रोफेशनल्स आए, जो यू नो हमारे हार्ड वर्क को रिस्पॉन्ड भी करें, क्योंकि हम बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं इनफैक्ट, यू नो। तो वैसा रिस्पॉन्स, अगर रिएक्शन वैसा ही आएगा ना, तो देन इट बिकम्स फन। अदरवाइज वो फन नहीं रहता है, वो एक तरह से ऑब्लिगेशन हो जाता है कि मुझे आगे लेक्चर देना और जाना है। तो वी डोंट डू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट डू दैट, एंड वी डोंट अप्रिशिएट दैट ऑल्सो, and we kick out the students from the batches, from the courses, you know, who are not interested, who just take admission thinking that ki certificate chahiye. So I just wanted to mention my honest opinion. ठीक है, आओ तो सोच के आना, मेहनत लगेगी, ऑफ कोर्स फल बहुत अच्छा मिलेगा, इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त आने वाला है। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड एज ऑफ नाउ, कोर्स तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ऐसा कोर्स मिलेगा नहीं आपको, आई एम अगेन सेइंग, बट सोच के आना, मेहनत लगेगी और इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है,
तो दैट गारंटी स्किल एज इज ऑलरेडी गिविंग यू, राइट? फीस भी नहीं लेगा, 3 लाख से कम का पैकेज लगेगा तो, ठीक है? तो या इन एन ओवर टू यू। मनोज ने आपके आंसर दिया है, मैं चाहता हूं उसको मैं बताऊं। मनोज ने कहा है नो सर, आई जस्ट कैजुअली, आई हैव टू इम्प्रूव माय नॉलेज। थैंक यू मनोज। हाँ मनोज, ठीक है। नो नो, आई जस्ट सी, सो दैट्स व्हाई आई सेड कि डोंट गेट ऑफेंडेड, ठीक है? आपने कैजुअली पूछा, लेकिन मैंने उसका ऑनेस्ट आंसर दिया, बिकॉज़ आई एम सीइंग सम स्टूडेंट्स इन ऑल दिस 5 बैचेस लाइक दैट, एंड दे ऑल हैव बीन सिंपली, मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल उनको बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है? बिकॉज दे आर नॉट मेंट टू गेट प्लेस्ड, बिकॉज दे आर नॉट, सी स्किलेज का जो क्रेडिबिलिटी है, हमारा क्रेडिबिलिटी जो है, बिकॉज हम लोग कितने लोग स्किलेज के साथ जुड़े हुए हैं एज मेंटर्स, यू नो, और हम भी आपका रेफर करते हैं रेज्यूमे आगे, यू नो, स्किलेज के भी कनेक्शंस बहुत ज्यादा हैं जहाँ पे आपके रेज्यूमे रेफर होते हैं, आप लोगों को प्लेसमेंट मिलता है। तो क्या होता है, एक तरह से अगर सही बच्चा डेवलप नहीं होगा ना, सही से नहीं सीखोगे, तो स्किलेज के क्रेडिबिलिटी पे भी एक तरह से धब्बा लग जाता है, यू नो, कि अरे यार तू तो बोल रहा था बहुत अच्छा सिखा के भेजा, इसको कुछ भी नहीं आता, यू नो, काइंड ऑफ। तो इसीलिए वैसे ही स्टूडेंट्स चाहिए और वैसा ही एनवायरनमेंट भी रहेगा। सो दैट्स आई वांट टू टेल यू वेरी फ्रैंकली कि ऐसा होने वाला है, ठीक है? सो डोंट गेट ऑफेंडेड प्लीज। यस, कुछ चीजें इसमें मैं भी ऐड ऑन करना चाहूंगा। लाइक किसी ने पूछा कि सर थोड़ा सा स्केड्यूल और थोड़ा सा बताओगे अच्छे से कि किस तरह से सेशन ट्रेनिंग होंगे और उसके बाद प्लेसमेंट ड्राइव कैसे होगा एंड ऑल। सबसे पहले तो आपका ट्रेनिंग होगा, और जब जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता रहेगा, हर टॉपिक पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा। एक टॉपिक खत्म हुआ तो उसके ऊपर टेस्ट, असाइनमेंट एंड ऑल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 90% अटेंडेंस चाहिए, मतलब चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग हो गया बस आपको भेज दिया गया, सर्टिफिकेट देके जाओ, इंटरव्यू में बैठ जाओ, नहीं। एट द एंड एक फाइनल टेस्ट होगा जिसे हम सीटीसी बोलते हैं, कोर्स कंप्लीशन टेस्ट, सीसीटी। उस टेस्ट में आपको 75% स्कोर करना ही है, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अगेन गिव द सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, बट वो फाइनल टेस्ट में आपको हमारे तरफ से क्लियरेंस लेके ही तभी जाना है। कोर्स डायरेक्टर मिस्टर सौरभ खेरा सर जब तक आपको ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे तब तक आप प्लेसमेंट ड्राइव में नहीं बैठ सकते। ऐसा नहीं कि आप बस जा रहे हो, 10 इंटरव्यू दिए वापस आ गए, ऐसा नहीं होगा। भेजा जाएगा जब आप जाओगे, मतलब उसके बाद 2 से 3 आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस, तब तक जब तक आप रेडी नहीं होगे तब तक आपको भेजा नहीं जाएगा। ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीजें देखा जाएगा, योर अटेंडेंस, योर दिस एंटायर 5 मंथ, योर परफॉर्मेंस, लास्ट योर टेस्ट, मॉक आपको पहले हमारे मेंटर्स की मॉक क्लियर करना पड़ेगा। सो ये कोई नॉर्मल जैसे साधारण ट्रेनिंग नहीं है, इट्स समथिंग डिफरेंट, जहां पे आपके कैरियर बिल्ड की बातें किया जा रहा है। और ऑब्वियसली आपने देखा सर, क्योंकि जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सामने है आपके। और मॉक के लिए अभी इंद्रनील आपने मॉक की बात करी, तो लेट मी टेल यू गाइस, मॉक इंटरव्यूज आपके बड़ी कंपनीज के सीईओज लेंगे। यू नो, वी हैव कॉन्टैक्ट्स, फॉर एग्जांपल डेमलर, आपने नाम सुना होगा, मर्सिडीज बेंज, ठीक है? डेमलर ग्रुप है वो, राइट? बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना? वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑटोमोबाइल ग्रुप इन द वर्ल्ड। उनके सीईओ भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, यू नो। सिमिलरली मर्सिडीज बेंज जो कार जो है, ये डेमलर, में ट्रक की बात कर रहा हूँ, यू नो, ट्रक मेकर जो है, भारत बेंज के ट्रक्स आपने देखे होंगे, चेन्नई में जो प्लांट है। इसी तरीके से मर्सिडीज बेंज जो पुणे में जो प्लांट है, इसके सप्लाई चेन के हेड, सोर्सिंग के हेड जो है, सप्लाई चेन एंड सोर्सिंग के हेड, वो जुड़े हुए हैं, ठीक है? ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं, आई कैन नॉट टेल एवरीथिंग। तो ऐसे लोग आपके मॉक इंटरव्यूज देंगे, 10-10 मिनट लगाएंगे आपके साथ, तो मजा बहुत आने वाला है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नाक कटेगी हमारी ऐसे लोगों के आगे, तो फिर एक्शन लिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिए जाएंगे। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। Other question. Okay, one question from Nitesh Mandal. Nitesh, that 3 lakh, that is CTC, उसका 20% आपको देना है। CTC 3 लाख, दैट इज मिनिमम, उतना तो आपको मिलना ही मिलना है, तभी आप ट्रेनिंग फीस दो। उसका क्वेश्चन था 3 लाख में 60,000 है इनकम शेयर एग्रीमेंट, माय क्वेश्चन इज 3 लाख इन हैंड होगा और CTC, दैट इज CTC। One question from Krishnendu Chakraborty, will the course session class be in only English? स्टार्टिंग में कहा गया था इट्स अ वर्नाकुलर, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों मिक्स करके किया जाए।
नहीं नहीं, if required, there are certain batches जहाँ पे some people are there from South Tamil India. Nadu, South India, especially from Tamil Nadu. Some people are there who don't understand Hindi that much, तो उनके लिए English में session deliver किया जाता है. So don't worry about it. You will be able to manage that easily. So don't worry about it. Correct. Something Vamsi Krishna asking how placement procedure will work. Will be there any legal bond? Okay. नाम क्या है? Sorry, I did not get the name. Krishna. Okay, Krishna. Yes, there will be a legal agreement, not a legal bond. As I already said, there will be no bond, but there will be a legal agreement that Inanil sir was just saying. Okay, अभी आप लोगों को बताया भी है कि agreement sign होगा. See, that agreement, जितने भी आप ये सवाल पूछ रहे हो ना, all these questions that you are asking just now, all these questions, इन सभी questions के answers, इन सभी क्वेश्चन के आंसर उस एग्रीमेंट में लिखे हुए हैं. ठीक है, कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर आप 2 महीने के बाद प्लेस हो गए तो फीस देना है नहीं देना, कितना देना है, यू नो ऑल दिस थिंग्स. क्योंकि ये सब चीजें रिटर्न में आनी चाहिए. अगर रिटर्न में नहीं आएंगी तो कल को आप कुछ क्लेम करोगे, नहीं तो सिलेज कुछ आपके ऊपर क्लेम करेगा. ठीक है ना, क्योंकि फीस इज नॉट अपफ्रंट ना. जहां पर फीस अपफ्रंट नहीं होती है वहां पर यू हैव टू हैव समथिंग इन रिटर्न विद एवरीवन, राइट. ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ न्यूसेंस क्रिएट करने वाले स्टूडेंट होंगे जो 3 महीना पढ़ाई करके छोड़ के भाग जाएंगे. ठीक है, हम उनको कहाँ पे पकड़ेंगे जाके, राइट. सो देयर हैज टू बी सम लीगल बाइंडिंग. ओके, एंड बाय सेइंग लीगल इट विल डोंट वरी अबाउट जस्ट लिसनिंग टू द वर्ड लीगल, यू नो, इट विल बी काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, एग्रीमेंट होगा छोटा सा जिसके अंदर यू नो ये सब जो मैंने कहा आंसर्स लिखे होंगे. उसके अंदर इनफैक्ट ये भी लिखा होगा कि आपको 75% मार्क्स क्लियर करने हैं, यू नो. उसके अंदर ये भी लिखा होगा कि आप अगर एक इंटरव्यू में क्लियर नहीं होते तो आपका दूसरा होगा, तीसरा होगा. वो भी नहीं होता तो आपका एक बैच चेंज किया जाएगा. उस बैच में भी अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं होता तो दूसरा बैच चेंज किया जाएगा, यू नो. तो व्हाट आई वुड से 90% चीजें जो आपके फायदे की हैं, यू नो, स्टूडेंट्स के फायदे की हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल रहते हैं. स्टूडेंट बोलेगा कि भाई मुझे प्लेसमेंट में बैठने क्यों नहीं दिया जा रहा है, यू नो, अगर मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, आप मुझसे एक्स्ट्रा फीस कैसे मांग सकते हो. ऐसा हो सकता है ना, स्किलेज बोलेगा एक्स्ट्रा फीस दो, दूसरे बैच में जाना है, यू नो. तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, एग्रीमेंट लिखा हुआ है, जिसके ऊपर आपके सारे सवालों के आंसर है और आपके बेनिफिट के लिए बनाया गया है वो. क्योंकि स्किलेज का सिर्फ एक ही बेनिफिट है, वो एग्रीमेंट लिख के कि स्किलेज को उसकी फीस टाइम पे मिल जाए, राइट. क्योंकि फीस तो ले नहीं रहे हैं ना अभी. उस एग्रीमेंट में सिर्फ फीस का ही फायदा स्किलेज को है कि स्टूडेंट छोड़ के ना जाए. ठीक है, जॉब मिलने के बाद धोखा ना दे जाए, इसीलिए वो एग्रीमेंट कर रहा है. अदरवाइज 99% ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू स्टूडेंट्स क्वेरीज, स्टूडेंट्स के फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए. ठीक है. So one more thing, Krishna is asking that he is very poor in Hindi, so please explain these things in English. Hello. Sir, Krishna is asking to please explain these things in English. Okay, I have to explain it again. Okay, he must have asked it in the beginning when he was asking the question. Okay, Krishna. Oh, okay. So what I was saying is there will be a legal agreement. Okay, it's not a kind of a bond or any thing related to student. That student has to do something. You know, if he, if he does not clear the course, what will happen? You know, he has to pay something. No, it's not like that. It's just a simple agreement answering all the questions that you guys are asking. Okay, all the questions that you guys have just asked and many more questions that you have not asked. Okay, related to assignments, related to attendance, related to study and all those things. And related to your placement, you know, how many times you will be allowed to sit in the interview, how many times you will be allowed to change the batches, you know, all those things for your benefit only. Okay, so I must repeat, for your benefit only. That agreement is for your benefit, because Skillage can say after 5 months that you are not eligible, you know. So then you can show the agreement to Skillage, hey, you have told me that my batch will be changed if I don't perform. You know, so all these answers, questions, everything is written in that agreement, and that will be signed by you, and that will be signed by Mr. Rohit Ghosh, who is the company owner, Skillage owner. Okay,
so that you guys are secured completely. That agreement will also have a clause where it is straight away written, very simply written, that you will be eligible to pay the fee only and only when you will get at least 3 lakh job. Skill Edge will not be authorized to ask you any fee other than the 6,000 registration fee till you get minimum 3 lakh salary of salary job. So all these things of your benefit will be written in that agreement, and that will be signed by Skill Edge also. Thank you, sir. Krishna replied, thank you, sir. One question from Krishnendu Chakraborty. I have a gap of 2 years after pass out. Will there be any impact on the placement? Don't know. See, we help you to get the placement. We help you to get to the companies. We help you to send your resumes to the companies. We help you to get highlighted to the companies. Ultimately, it's companies' policies that act. Okay, you never know in some company if for example Tata Motors, if there is some opening in Tata Motors, suppose there are 10 openings in Tata Motors, we'll send your resume. But if they have a policy that they don't allow someone with a gap of 2 years, okay, then no one can help, no? So it all depends, so that's why I'm saying I don't know. Okay, कि जब आप pass out होगे, when you get passed out, complete this course, which companies your resume will be sent to? क्योंकि at that point of time जितनी भी companies के साथ जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे requirement होगी वहीं पे आपका resume जाएगा, right? ठीक है, and that's for sure you will get a job. You have to get a job. Otherwise, Skill Edge will not get its fees, right? So you will get a job of minimum 3 lakh. But again, it depends upon the industry. It depends upon the company. If their policy allows for someone to get interviewed with a 2 years of gap. Okay, but mostly ऐसा नहीं होता है. I would say don't worry much about it. Mostly ऐसा नहीं होता है. It all depends on the skills. ठीक है, कि आपने अपने skills क्या दिए हैं, आपके पास skills क्या हैं, what you have to offer. Mostly ऐसा नहीं होता है. Mostly 99% of the cases में ऐसा नहीं होता है that they don't consider your resume because of a gap. We will make your resume like that. Okay, resume building will also happen with Skill Edge. कि वो चीज ज़्यादा highlight नहीं होगी. That's what I can say right now. Correct. बनाओगे क्या? Tarun, please go on mute, Tarun, or else. Okay. Mayank, sir, you teach standard like IEC and FDA or any other use in mechatronics. Mayank is asking, sir, you teach standards like IEC and FDA or any other use in mechatronics? This question was asked for Ashwin sir. Is Ashwin sir there? Because he will teach you mechatronics. No, Ashwin sir is not here. I am not aware of the standards of mechatronics. So I think you can park this question in the nil. We can ask this question to Ashwin sir. We can get Mayank connected to Ashwin sir. I think, yes, of course, if these standards are international standards, these things will be taught to you guys. सभी standards teach तो किए जाएंगे आपको. Since I don't know the mechatronics standards in specifically, so I cannot answer it. But again, just to mention, that's a welding standard. ISO 3834 रहता है, ISO 9001 रहता है, आपको जो क्वालिटी का रहता है. अभी मैंने आपको PPAP वगैरह के जो स्टैंडर्ड दिखाए थे, MSA के PPAP, FMEA, SPC, all those standards will be taught to you. हर चीज स्टैंडर्ड के हिसाब से बात की जाएगी, इफ एप्लीकेबल, और मैकेट्रॉनिक्स में भी आई थिंक स्टैंडर्ड्स विल बी टॉट. बट अश्विन सर से कनेक्ट करवा सकते हैं आपको टू जस्ट टू वेरीफाई इट. यस सर. क्लास के शेड्यूल और टाइमिंग में फिर से एक बार बता रहा हूँ, ऑलरेडी सर ने आपका आंसर दिया है. मंडे टू सैटरडे जो भी आपके सेशन इवनिंग में ही होगा. संडे मॉर्निंग और आफ्टरनून और इवनिंग. क्लियर?
मंडे टू सैटरडे जो भी सेशन होगा वो इवनिंग में ही होगा। संडे सुबह भी हो सकता है, दोपहर को भी हो सकता है और इवनिंग में भी। सेशन that टाइम all depends. Yes. That all depends. Just let me add. That all depends on the mentors timing also, right? Yeah. Because mentors भी available होने चाहिए, तो संडे के दिन सबकी छुट्टी रहती है, तो कभी कभी मेंटर्स का टाइम शाम को मिलता है, मोस्टली शाम को मिल जाता है 99% ऑफ द टाइम्स। समटाइम्स ऐसा होता है दैट मेंटर्स हैव देयर अदर रिस्पांसिबिलिटी टू फैमिली रिस्पांसिबिलिटी रहती है, तो कभी कभी दोपहर को भी कर लेते हैं, मॉर्निंग में भी कभी कभी होता है, नॉट एवरी टाइम। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। हमारे एक दूसरे सेशन भी है, हमें क्लोज करना है अभी जल्दी से। व्हाट टाइमिंग? अच्छा, टाइमिंग, इवनिंग टाइमिंग। ऑब्वियसली इवनिंग मींस आफ्टर 6 PM को ही होगा आपका। आफ्टर 7 होगा, आफ्टर 7, मोस्टली आफ्टर 7, 7:30 टू बी वेरी प्रिसाइज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एब्सोल्युटली, जैसे आपको दिख रहा है कि ऑल द मेंटर्स दे आर ट्रैवलिंग राइट नाउ, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टाइमिंग जैसे चलने का आफ्टर 7 PM। One question is for you, sir Mayank. I already done DFMEA, but they teach only how to fill form and just upper things. Can I goes very deep? क्या sorry, he just did DFMEA, but they only show how to fill the forms. हाँ, फॉर्म तो तुम्हें अभी कभी बता देता हूँ यार, फॉर्म में क्या क्या रहता है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट मयंक। फॉर्म तो आपको 5 मिनट में बता देंगे हम। फॉर्म ही अगर बताना है तो मैं अभी कभी बता देता हूँ, लिख लो पूरा फॉर्म में क्या क्या रहता है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फॉर्म नहीं होता, टेम्पलेट बोलते हैं उसे, फॉर्म नहीं बोलते हैं। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ भी समझाया जाएगा तो केस स्टडी के साथ समझाया जाएगा, और आपको बोथ फॉर DFMEA PFMEA दोनों के लिए आपको केस स्टडी दी जाएगी। ओके, वो केस स्टडी में स्कोर भी किया जाएगा आपको, और आपको एक्चुअल केस स्टडी दी जाएगी जो कि इंडस्ट्री रिलेटेड रहेगी। आपको एक्चुअल DFMEA करने के लिए दिया जाएगा और समझाया भी जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। फॉर्म देना है तो यार गूगल जाके कर लो यार, फॉर्म गूगल पे भी अवेलेबल है, यू डोंट हैव टू कम टू स्किलेज। सर हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर लिया है कि सो नाउ हम इसको अभी यहीं पे यस, यू हैव अनदर सेशन। Sir, I have another session, so I just need this link from your end. Sure, definitely. No, I am also leaving, guys. I am also leaving. I have just reached, so I also need to leave. If there are any other questions, generally you can connect with me. You can get students connected with me. I'm okay. Yes, but I also have to leave. Okay. Few last line. अगर किसी को कुछ भी सवाल है, कोई भी है, you can connect directly, call to me. हम सर के साथ आपके we will connect with you to directly sir also. So with this, we conclude today's session. Thank you so much, Mr. Saurav Khera sir, all the mentor, and thank you students also for your timing, for your patience. Thank you. But feedback form definitely fill करना, और all the best for your test. Feedback form definitely fill करना, all the best for your test. जो भी सवाल है आप कॉल करके 1:1 मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको सर के साथ भी कनेक्ट करवा दूंगा इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। फीडबैक फॉर्म डेफिनेटली फिल करना। Can I conclude the session? Yes, definitely ma'am, definitely, please.